Guinness Book record that is going to be set by these dancers today on the occasion of Rangali Bihu. Of course, the Prime Minister often attends all these harvest festivals, today being Baisakhi as well, and other harvest festivals across the country. The Prime Minister is going to be in Assam, and in just a short while from now, we'll be seeing him inaugurate that AIIMS 750-bedded hospital. 150 beds of the AIIMS hospital will be operational from today itself. They'll also have Ayush beds and specific elective surgery specifications in AIIMS. This is going to be the first AIIMS for the entire northeastern region, and that is a big promise that the government of the BJP-led government had made for the Northeast, which has come true. And certainly on the occasion of Rangali Bihu, the Prime Minister is here, and he will also be taking part in the most colourful festivities that we'll bring to you throughout the day. Follow me. Milan, as you were pointing out, the operationalization of AIIMS Guwahati, of course, is going to be a momentous occasion for Assam and the Northeast region. So that is going to be huge in itself, because the foundation stone of this very AIIMS, in fact, this hospital, was laid by Prime Minister Modi in May 2017. And today he will be inaugurating that today. Milan, thank you so much for joining us with those details. Giving the project as a deemed export project also, they chose to add, after the tender was called, before the tender was closed, they chose to add custom duty to the tender process. Because of which what happened, the company number one, which was the CAF Spain, which was the lowest bidder at 1,417 crore. Alstom was the second lowest bidder at 1,439 crore. Because of this addition of excise duty, the CAF from first it became second. From 1,417 crore it became 1,496 crore. Alstom from second 1,439 crore it became first, which is 1,471 crore. Of course, we'll give you the document. So here if you see how the simple addition of customs duty has pushed Alstom from second to one. When objections were raised after the closure of tender, then the customs duty was promptly it was refunded back to Alstom, because it was the qualified company, and they chose to go as per the central government of India process. So one tweaking they made by addition of custom duty, thereby they changed the priority of companies. Our allegation through our sources is, for the election that happened in 2011, the DMK party and the Deputy Chief Minister then Sri M.K. Stalin, he accepted 200 crore bribe from this Alstom through its two technical consultants based out of Singapore and Hong Kong, the company called Indo-European Ventures Private Limited in Singapore, and a company called Global King Technology Limited in Hong Kong. They chose to launder the money, get the money into Tamil Nadu and give the money to the DMK for their election fund. Later, Alstom was charged in America for bribing governments across the world for pushing their product. Accordingly, Alstom was fined by the American financial regulators, both by the US and UK combined regulators, for a sum of USD $772 million. That's a fine they made. So we will be writing to the CBI, and I'll be the complainant also raising this issue. And CBI has to promptly get into it, get the documents, get into the shell companies, and make sure that why was the tender qualification changed. This is a direct allegation we have made on the Honorable Chief Minister today. Though it is about 13 years old, but it is very important that after it has come to our attention, we are bringing it to the public domain. And not only that, and we are very clear as a party that we want to reflect the true vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, a clean government, a clean party which takes up issues that matters to the public. That is why coming June 1st, second week, once our leaders finalize the BJP unit's Nadai Payanam, in English Padayatra, our leaders and cadres would walk across Tamil Nadu, taking up the issue of corruption, talking about Prime Minister Modi ji, his Gujarat model, how he is against corruption, how Tamil Nadu can change for the better. And for that, we have invited the common people also to join our Nadai Payanam and make it a grand success, because it is not a party-oriented Nadai Payanam, it's a people-oriented Nadai Payanam, Padayatra. So that also we have spoken today. And this part 1 files is not ending today. It will continuously keep happening. And the part 2 will focus more on the Binami assets. Because the new ministers who have come to DMK, they are very clever. They are not like old ministers who have directly invested in asset. They have a lot of Binami holdings and property. That is the new style of DMK post 2010.
And we would like to disclose that also in the public forum along with the properties, the photographs and everything, because the whole idea of trying to do this is we want to tell the Tamil people corruption matters. And none of us should take corruption for granted. And none of us should say that every party is corrupt. What is the logic of some party talking about anti-corruption? Let us vote for some party here. That will not hold water now, because a lot of money is going down the drain. A lot of shell companies are paying money. The common man is suffering. And also we have spoken about the Dravidian model of development, how DMK as a party is trying to fool the Tamil people. Coimbatore and Chennai are cities created by the British to grow their empire and for their export market. And Chennai, which was the original Fort St. George, when the Britishers came and brought this land, when they made the white city and the black city for the natives and the Europeans, from there the city grew as a manufacturing powerhouse. Now a party which came to power in 1967, which talks about Dravidian model of development, they challenged the DMK to show the model of development that is happening beyond Chennai and Coimbatore. The southern Tamil Nadu still has got problems, no development is happening. Central Tamil Nadu is agriculture dependent, no manufacturing or agriculture allied industry is there. So this is also an important talking point which we will be taking up during our Padayatra. And also I have told the press on behalf of BJP Tamil Nadu, we will be taking up the questions after a week. Once they examine the documents, once they have the opportunity to go talk to DMK, show them these papers, let them come back with replies, let them say I was not a property, this is not my property, I don't own it. Then we will be willing to take this on and answer questions also. And we promise you that we will reflect the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision here truly. Whatever words and letters he is talking, that will be in spirit in BJP Tamil Nadu, because we believe corruption is the single biggest problem for our Tamil society. And if we take it up and Tamil people respond to us, then BJP Tamil Nadu is the only party that is available today which can give a clean government. I thank the press for their patience, but I promise you I'll take your questions after a week. Till you have the opportunity to go talk and come. Press tweet you mentioned about that this scam is won't end with DMK party. And normally we are not going one-sided. So moment we talk about scam, we talk about corruption, it is only natural that we talk about every single party that has stayed in power with taxpayers' money. That is only fair and neutral. And in this case, we are not against any party. We are not panga with this party, that party. We have leaders in DMK whom we respect, whom we see outside, a certain segment of leaders. Of course, in other parties also we respect leaders. But once you take up the corruption angle, it is only fair that you present the facts before the Tamil Makkal of every single political party that has come to power and people's money. So that also will be taking up in the coming months. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, So that is what BJP Tamil Nadu chief has said, that he will be in fact going to the CBI with a corruption complaint against the chief minister of Tamil Nadu in the press conference that he just addressed. In fact, we're slipping into a very short break. Coming up next, in the Jhansi encounter FIR, cops claim they wanted to catch Asad and Ghulam alive, but the duo attacked the cops and were killed in retaliatory firing. You are watching India Today. So in this age of everyone being on Ozempic and wanting to lose weight, there is a healthier alternative available to you. It is a superfood. It's called Baobab. It's taken the entire world by storm. The internet is in a tizzy, and all the people who are taking to wellness and more holistic ways to lose weight are looking at Baobab now. So even if you're a vegan and you're not getting enough calcium, Baobab is the way to go. Just say that superfoods are especially foods that are aiding your regular food, and superfoods really help you get the right kind of minerals, vitamins, and different areas of your body that are deficient of many things. You can achieve them through superfoods. So this comes from Zambia. Its baobab tree is known as the tree of life. It's a prebiotic fiber as well, so it helps with weight loss. It helps with your immunity as well. The skin glow, they apparently help in weight loss, it balances blood sugar levels. It also is a well-known anti-inflammatory, so it's actually something that can help in pain, and it was previously used in rheumatoid arthritis as well. Cutting across age groups, you can have it
It's not bad tasting at all. It's not the greatest, it's not a dessert. So be kinder when it comes to superfoods. Every superfood will have its own distinctive taste. This one does too, but this is very tolerable. And it's just like the way you're not scared of having any other food that is lying in your kitchen and you have that for your breakfast, or you have your fruits, or you have your regular lunch and dinner. Incorporate superfoods in your regular life and see how your life turns around. As State of War Karnataka begins, a reminder why India today is the true number one. The 5 big faces speak to us before all others. From Chief Minister Bommai our intent is to weed out corruption. to Chief Challenger Siddaramaiah, Yes, 100% I'm an aspirant. from old warhorse Yediyurappa And I have got 100% confidence that we are going to come back to power in Karnataka. to muscle man DK Shivakumar, My number Karnataka on 13th, 141 will be the number. and Kingmaker Kumaraswamy. Offer is there. Okay. Everybody offering me. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. Good morning, viewers. Let's take a look at the weather report across the major cities this morning. Thiruvananthapuram is at 34 degrees Celsius with an AQI of 92. Mumbai is at 37 degrees Celsius with an AQI of 70. Panaji is at 31 degrees Celsius with an AQI of 86. Ahmedabad is at 40 degrees Celsius with an AQI of 111. Bhopal is at 39 degrees Celsius with an AQI of 97. Jaipur is at 38 degrees Celsius with an AQI of 139. Delhi is at 39 degrees Celsius with an AQI of 161. Srinagar is at 24 degrees Celsius with AQI being 60. Lucknow is at 40 degrees Celsius with an AQI of 131. Patna is at 41 degrees Celsius with an AQI of 122. Kolkata is at 41 degrees with an AQI of 107. Hyderabad is at 39 degrees Celsius with an AQI of 95. Bangalore is at 35 degrees Celsius with an AQI of 56. Chennai is at 35 degrees Celsius with an AQI of 84. This is all we have for you in this segment. Hope wherever you are, you find favorable weather around you. Keep watching India Today for all the weather updates with me, AI Sana, all through the day. Good afternoon and a warm welcome to India Today. I'm Paulami Saha, and these are the headlines we're tracking at the top of this hour.
Big revelation in Umesh murder case. Don Atiq was in touch with son Asad from inside jail. Atiq directed Asad on where and how to escape. "28 days on, no trace of Amritpal Singh. High security alert on Baisakhi in Punjab. Sources say Amritpal is likely to address a Sangat. Will Amritpal be encountered next? Prime Minister Modi dials UK Prime Minister Rishi Sunak. Prime Minister raises Khalistani attack on Indian mission, seeks action on anti-India forces. Sonia launches another scathing attack on Modi, says liberty threatened by misusing law. Opposition leaders shake hands to fight Modi. Sharad Pawar meets Rahul Kharge. Nitish held talks with Arvind Kejriwal. Will this mean Modi versus all in 2024? Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-powered by Jaguar. Discover the magic of smart life. News coming in right now. Lakshman Sawadee has reached former Karnataka Chief Minister Siddaramaya's residence with Randeep Surjewala. So it is likely that Lakshman Sawadee, who in fact was denied a ticket by the Bharatiya Janata Party, could be jumping ship now. Earlier, he had in fact reached the Vidhan Parishad to resign as a member of the Legislative Council, and now it is clear that he is in fact jumping ship to the Congress party. So a disgruntled Neta who was denied a ticket by the BJP Central Command has now decided to jump ship to the Congress party ahead of the upcoming elections in the state of Karnataka. Lakshman Sawadee in fact was a former Deputy Chief Minister of the state. He in fact represented the Athani constituency in Karnataka for 3 times before he lost the election the last time round in 2018, and as a result of it, the BJP has denied him a ticket this time round. Remember that the BJP has introduced a lot of fresh faces, especially in constituencies that the party had lost in the last elections. They have not repeated any of those candidates that already lost last year. We will be holding a press conference, then after discussion we'll tell you. But is he joining us? He'll be given to Athletic ticket, sir? Please wait for a few hours, sir. So there you saw Lakshman Sawadee. He is likely to in fact join the Congress party. Of course, the party is keeping absolutely mum about it right now. You can see Randeep Surjewala. I don't know where. Have some patience and don't push our girl there. Sir, there is a
ongoing discussion. There is an ongoing discussion. Right now, just wait for 2 hours more. We will call you in a formal press conference and then intimate you. This is a social visit. This is just a social call. Leaders meet each other all the time. Political leaders are meeting each other. This is merely a social call. Any political decision that we will take in full glare of our media friends and after consultation with all Congress leaders. Sir, how is the expression against the BJP? Sir, I am again repeating, Lakshmanji is a very seasoned senior leader of the state. There is an ongoing discussion. No decision has been taken as yet. This is a social call where CLP leader, PCC and myself are meeting. Please wait and we will inform you. Thank Randeep Surjewala over there saying that a decision hasn't been taken as of yet. This is a social visit. He says that Lakshman Sawadi has in fact made to the Congress residence of, in fact, former Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. You saw DK Shivkumar in those pictures as well. Randeep Surjewala, so the top leadership of the Congress party in the state of Karnataka, present right now over there. Lakshman Sawadi, of course, had said that he will be holding talks with both the Congress and the JDS before deciding what he wants to do. But clearly, he, in fact, has now decided to jump ship after quitting from the Bharatiya Janata Party. He, in fact, was denied a ticket by the BJP from the Athani constituency in Belagavi district. He had represented that constituency 3 times round but lost the elections in 2018. Let's listen in to what Randeep Surjewala said a short while ago. This is a social visit. This is just a social call. Leaders meet each other all the time. Political leaders are meeting each other. This is merely a social call. Any political decision that we will take in full glare of our media friends and after consultation with all Congress leaders. Sir, how is the expression against the BJP? Sir, I am again repeating, Lakshmanji is a very seasoned senior leader of the state. There is an ongoing discussion. No decision has been taken as yet. This is a social call where CLP leader, PCC and myself are meeting. Please wait and we will inform you. Thank you. Okay, so that is what the Congress has to say, that no decision has been taken as of yet. Sagai, my colleague, is joining us over the phone line from Bengaluru. Sagai, the Congress says no decision has been taken as of yet, but what are you hearing? What we get to hear from Saudi is already in talks with the Congress leaders, and he has taken a special flight from Belagavi district of Karnataka. And now he is also set to meet KPCC President DK Shivkumar and opposition party leader Siddaramaiah. And once he resigns, he will from the party, he will also go ahead and tender his resignation with the chairman of Legislative Council from his MLC post. And thereafter, the decision will be taken that when he will be inducted in the party. Remember, just very few days left to file the nomination. It is 14th. By 20th, everybody in the Karnataka has to file the nomination, and probably the Congress might induct him. Right, Sagai, just hold on for a moment because we're getting some inside pictures now from former Karnataka Chief Minister Siddaramaiah's residence. You can see Siddaramaiah is present over there. DK Shivkumar, KPCC President, is present in that meeting. Lakshman Sawadi, you can see him in the pictures as well as Randeep Surjewala, who just spoke with the media outside, and he said that a decision hasn't been taken as of yet, but all of them are meeting at the moment. The indications are very clear that Lakshman Sawadi could in fact join the Congress party, because this is all happening in full public view, in full public glare at the moment. And you can see over there Chief Minister Bommai
who is also there at another function. And this is, of course, a disgruntled BJP member, party member for many, many years who has decided to jump ship after being denied a ticket. He was former Karnataka Deputy Chief Minister, Lakshman Savadi, and MLC as well. He, of course, had been contesting from the seat of Athani, but in 2018, he lost the elections. Nagarjun Dwarkanath is joining us live from outside Siddaramaya's residence at the moment. Nagarjun, is Lakshman Savadi jumping ship to the Congress party? Has it been decided already? Is it clear? Well, most likely he's joining the ship from BJP to Congress. This is a big wicket for the BJP because he was the former Deputy Chief Minister, the core committee member as we speak, and the sitting MLC also. We saw him enter Siddaramaya's residence. Behind me is Siddaramaya's residence where the meeting is going on. If I can show you some visuals, Polomi, that I've just received of this meeting. Let me also show you some visuals. If I can ask my camera person to zoom into my phone right here, you will see this is Siddaramaya, Mr. D.K. Shivkumar, as well as Lakshman Savadi and Surjewala, all sitting in the couch in Siddaramaya's house and discussing what at those images right now, Nagarjun. Ticket. So most likely, follow me. These are live images that we are bringing to you, exclusive to India Today. Let me also try speaking to a couple of leaders here. They are saying, give us 2 hours of time. We will have a clarity. We will have a clarity of Lakshman Savadi joining the Congress or not. The negotiations are that you will have to sort out the local issues in Athani, in Belgaum, that local Congress leaders should not make sure that I lose. So they also have to help me. Ministry discussion is also one of the options, that if at all I get elected, will you accommodate me as a minister in the cabinet? Mr. Raghavendra Hitnal, Mr. Hitnal, sir. I have senior MLA, Mr. He's speaking to the other media. Let me get back to him. Polomi, so what I was talking about is there are also negotiations that if at all I come back as an MLA, will you accommodate me in the cabinet? Because he was the former Deputy Chief Minister, a big Lingayat face in the Belgaum belt as well. So that's the negotiation that he's doing right now with Surjewala, D.K. Shivkumar and Siddaramaya. What is happening right now, Polomi, is these scenes are usually seen. Nagarjun, thank you so much for joining us with those details. We'll, of course, come back to Nagarjun when there is clarity on the Congress's front, whether they are accommodating Lakshman Savadi into the party. Cutting across live to Prime Minister Modi's images right now. He is in Guwahati at the moment. As you can see, he's joined by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, who in fact received him a short while ago. He is at AIIMS Guwahati at the moment. You can see Health Minister Mansukh Mandavia is also there in those pictures. So the Prime Minister there, in fact, will be inaugurating and operationalizing the AIIMS Guwahati, which is a momentous occasion, in fact, for Assam and the Northeast, the first AIIMS in the area. This, in fact, was an AIIMS for which the Prime Minister himself laid the foundation stone in May 2017. Today, on a momentous occasion in Assam, today is the festival of Bihu, which is being celebrated across the state of Assam. The Prime Minister is in the state to, in fact, inaugurate the AIIMS facility over there. It's not just the AIIMS, he will, in fact, also be throwing open 3 other medical colleges in Assam as well. He will also be launching the Aapke Dwar Ayushman campaign in Assam. He will also lay the foundation stone for Assam Advanced Healthcare Innovation Institute. So, major boost for healthcare today as far as the state of Assam is concerned. This AIIMS, in fact, is huge for the state of Assam and the Northeast as well. In fact, if you look at a total of all the medical projects that the Prime Minister will be, in fact, inaugurating and laying the foundation stone for today in Assam, they're worth more than about 3,400 crores. The Prime Minister there inaugurating AIIMS Guwahati. It becomes operational, marking a momentous occasion for the state of Assam and the entire Northeast region. In fact,
This AIIMS has been built at a cost of more than 1,120 crore rupees. It is a state-of-the-art hospital with a capacity of about 750 beds, including 30 Ayush beds as well. This hospital is expected to have an annual intake capacity of 100 MBBS students every year. The hospital will provide world-class healthcare facilities to the people of the entire Northeast. जिस योजना की उन्होंने शुरुआत की थी, जो संकल्प उन्होंने लिया था, जो वादा उन्होंने किया था, आज वो साकार रूप ले चुका है। उस वादे को पूरा किया है, उस संकल्प को पूरा किया है। और ये सी तस्वीरें हमें दिख रही हैं गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ ही हम स्वागत करते हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार महोदय का, असम के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव महंत जी का। नमस्कार देवी और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स का औपचारिक राष्ट्र को समर्पण तथा असम के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज का आभासी उद्घाटन एवं असम में 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ और असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हेतु आयोजित इस भव्य समारोह में मैं केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एवं असम सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। So that is, of course, Prime Minister Modi right now at the inauguration function of AIIMS Guwahati. Milan Sharma is joining us live this morning, this afternoon from Guwahati. Milan, a big momentous occasion for Assam and the Northeast. Not just the AIIMS Guwahati, several healthcare projects that the Prime Minister, in fact, will be inaugurating and laying the foundation stone for. With the project of AIIMS, which is a very ambitious project that the Prime Minister is inaugurating in Guwahati. It's the first AIIMS hospital for the northeastern region. The fact that proper healthcare services and big specialized healthcare services have been one of the prime focus of the BJP-led government for the Northeast. This is one such promise that has come true today on the occasion of Bihu as well. Not just that, this AIIMS has been built at the cost of about 1,200 crore rupees. It's a project that is also built along with 3 medical colleges to up the ante on the medical infrastructure and also the teachings and the medical students that could now benefit from these projects in the entire northeastern region. Of course, in Guwahati, there with Chief Minister Himanta Biswa Sarma as well as the Health Minister Mansukh Mandviya, who is in attendance there as the Prime Minister launches the AIIMS for Guwahati, Assam as well as other regions. This is a big promise that was made by the BJP. Along with that, the kind of projects that have been laid forward as medical colleges also speak volumes of the work that the BJP is doing. It's being called the Ayushman of the Northeast, or Aapke Dwar Ayushman in the northeastern region. And apart from the earlier AIIMS Delhi, AIIMS Mandi, which are other projects that have been launched and operational currently, this project holds a lot of prestige, especially for the entire northeastern region of the Seven Sisters there. Polemy. Absolutely, a big mega boost for the Northeast, for the state of Assam, as far as these medical projects are concerned, these healthcare projects are concerned. Today, of course, is a momentous occasion as well, because this is a big bonanza for the state, Milan. On the day of Bihu, the state is celebrating this festival. The Prime Minister also is scheduled to watch a mega Bihu dance, which is intended to, in fact, set a new Guinness World Record as well later this evening.
Well, that's right, Paulami. In fact, we know that the Prime Minister often celebrates and respects the harvest festivals of all states and regions of India. And this time he has come to Assam on the occasion of Rongali Bihu, as popularly known here. It's a harvest festival that is celebrated with great aplomb in the state of Assam and other regions of the northeast. The Prime Minister will be witness to more than 11,000 dancers who will be dancing to the tunes of the folk songs in the northeastern region. This is going to happen in Guwahati, and absolute security measures have also been put in place for the PM's visit there. And as you just said, that this is going to be a Guinness Book of World Record breaking event that is going to take place today. Never has it happened in the history of the country and the world that so many dancers, more than 11,000, will come together and sway to the folk songs of the northeastern region. Of course, we also hear that the Prime Minister, who's often very fond of folk songs and music, could also participate in this colourful event today in Guwahati. Paulami. Right. Milan, thank you so much for joining us with all of those details. Milan is on the ground in Guwahati today, of course, a big day for the people of Assam. We're slipping into a very short break. Coming up next, in the Jhansi encounter FIR, cops claim they wanted to catch Asad and Ghulam alive, but the duo attacked the cops. They were killed in retaliatory firing. Why does this happen? Let me tell you the science behind it. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mode. As State of War Karnataka begins, a reminder why India today is the true number one. The 5 big faces speak to us before all others. From Chief Minister Bommai, Our intent is to weed out corruption. To Chief Challenger Siddaramaiah, Yes, 100% I'm an aspirant. from old warhorse Yediyurappa, And I have got 100% confidence that we are going to come back to power in Karnataka. to muscle man DK Shivakumar, My number Karnataka on 13, 141 will be the number. and Kingmaker Kumaraswamy. Offer is there. Okay. Everybody offering me. When it's Karnataka, there's no competition. India's #1 election channel. News coming in right now. Police and agencies got inputs about Shaista Parveen's arrival. Mother Shaista Parveen can come when son Asad's body reaches
Blueprint prepared for the arrest of Shaista Parveen. There will be deployment of women policemen in plain uniform. Women policemen will also be stationed near Atiq's house. Masked men policemen will also be, in fact, women policemen will also be deployed. Women, in fact, police were instructed to keep a very sharp eye. So there are some inputs that the police of UP are receiving that Shaista Parveen could appear at the time that Asad's body is buried. Samat Srivastav is joining us live at the moment. Samat is in Prayagraj. Samat, what are you learning from your sources within UP Police? Well, we are getting from the police sources that Shaista may appear near the burial ground or at the residence of Atiq Ahmed, where the body will come from Jhansi, because the body of Asad Ahmed is coming with the help of Prayagraj police from Jhansi to Prayagraj, and that could be the scenario where Shaista Parveen may appear to see the final thing of his son Asad Ahmed. Because what we reported from the burial ground, we heard that the burial ground people received a call yesterday to bury Asad Ahmed near the grave of his grandfather and grandmother. That means the father and mother of Atiq Ahmed. And with Shaista Parveen coming into the scene, that could be scene 1, she could surrender. Scene number 2, she could be arrested, because the women cops of Uttar Pradesh police have been alerted, and they have been alerted to remain in plain dress and keep a vigil eye not just around the burial ground but also around the residence of Atiq Ahmed, where first the body will reach, and then from that particular place the body will reach for the final rites in the burial ground, where the body will be buried in the graveyard around that particular place where the dead body of his grandfather and grandmother is already there. So that's a big update coming in, because UP police is already keeping a vigil eye on the accomplice of Atiq Ahmed, and they have arrested, detained and encountered various of them. But after the encounter killing of that particular Ghulam and Asad Ahmed, things have widened for Uttar Pradesh police, and it is also being said that the next target could be the Guddu Muslim, because Guddu Muslim is also in the radar of Uttar Pradesh police. But in between, the appearance of Shaista Parveen in today's burial could be a changing factor in this particular case, because number 1, Atiq Ahmed is already in the police remand, 4-day police remand. Ashraf is already in the 4-day police remand, and if they get Shaista Parveen, then that will be the major breakthrough for the Uttar Pradesh police, because she could be the factor for the proper damage of Atiq and gang. Okay, Samat, they're tracking all those developments. They're bringing us this exclusive piece of information that Shaista Parveen could, in fact, finally make an appearance when Asad's body is buried. Shocking details have come to fore in the Asad encounter. Sources have informed India Today that Asad was in direct contact with father Atiq, who is in jail. Atiq Ahmed was apparently using a mobile phone in Ahmedabad Sabarmati jail. Meanwhile, the remand of Atiq Ahmed and Ashraf has been granted. It has already started. The police have interrogated them and will continue to interrogate them at Dhumanganj police station in Prayagraj till April 17. Atiq's ISI link will also be scanned. Sources have told India Today that Guddu Muslim, who is one of the accused in the Umesh Pal murder case, reached Jhansi on the second day after the murder. He was living in a house near Paricha Dam, not so far away from the spot where the encounter took place yesterday. Now, the FIR in the matter has been filed, in which the police has said that they tried to capture Asad and Ghulam alive, but they fired at the UP STF team, after which they were killed in retaliatory firing. Meanwhile, Asad's post-mortem has now been conducted. Atiq Ahmed's wife Shaista Parveen has been on the run. She has proved to be a fugitive, and a court surrender may be her next move, but now reports also suggesting that she could make an appearance when Asad's body is laid to rest, probably at the burial ground, or before that at Atiq Ahmed's residence in Prayagraj. Let's listen in to opposition leader Akhilesh Yadav. चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे?
महागठबंधन में क्या स्टैंड है सर? वो अलग बात है। एनकाउंटर किया, पुलिस का मनोबल गिरेगा इससे? क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं था? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? क्या आईपीएस पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि आईजीएफ उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। मुस्लिम के एनकाउंटर होता है तो हत्या बोली जाती है, बाकी लोग। मैं ये कहता हूँ, गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी पलटने पे आपने क्या कहा? गाड़ी पलटने में आप बताइए, थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? So there you heard Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav. Now there are many speculations that are doing the rounds as to how Atiq's son Asad and his aide Ghulam were gunned down. India Today decodes how this encounter took place and how the dreaded gangsters who were carrying 5 lakh rupees bounty each on their heads were killed by the UP STF team. ये नेशनल हाईवे और मेरे पीछे चिरगांव है। आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि इस एनकाउंटर की कहानी एफआईआर की जुबानी, यानी पुलिस ने जो कुछ कहा है वो आपको बताऊंगा। ये जो इलाका है पीछे चिरगांव है। कहा गया कि चिरगांव में असद देखा गया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली, एसटीएफ की टीम यहाँ मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पर ये शुरू होता है इलाका जो कि परीक्षा पावर प्लांट या डैम आप कहें, वहां से पुलिस का कहना है कि ठीक यहीं पर असद मोटरसाइकिल पर सवार था और साथ में गुलाम। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी गई और असद और गुलाम मोटरसाइकिल से इस हाईवे के छोड़कर इस कच्ची पगडंडे की तरफ भागते हैं, इस कच्चे रास्ते की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आगे का पूरा रास्ता कैसे है और कहाँ पे एनकाउंटर हुआ। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे रास्ते में एक मोटरसाइकिल किस स्पीड में जा सकती है, रास्ता कैसा है, और एक गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी में थे, जबकि असद और गुलाम मोटरसाइकिल पर। तो अब ये हाईवे को छोड़ दिया और इस कच्ची पगडंडी, ये पूरा परीक्षा जो पावर प्लांट है, जो डैम है, वो इसका रास्ता है। तो पुलिस के हिसाब से असद इस रास्ते से अब आगे निकल रहा है। यहाँ से ये पूरी करीब 2 किलोमीटर का चंक है। 2 किलोमीटर के रास्ते में इनकाउंटर होता है। कैसे, कहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये देखिए, ये पूरा रास्ता, अब यहाँ पे ये रेत, अभी ये सारा शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इस तरफ डैम है पावर प्लांट का, और मेरे इस तरफ दाहिनी तरफ जो है, इसको एस डैम कहते हैं। यहाँ पे तमाम रेत और राख, चूंकि पावर प्लांट से जो राख निकलती है, सारी चीजें हैं, वो इस तरफ है। तो इस पूरे सड़क पर काफी ज्यादा आपको रेत मिलेगी। अभी तो ये थोड़ी बहुत आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है, तो यहाँ से फिर भी आप ठीक ठाक स्पीड में चल सकते हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, दीपक साहब, ये आपको इस हिसाब से लेके चलेंगे। तो यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे आगे देखिए, एक इत्तेफाक से मान लीजिए यही वही मोटरसाइकिल है, हालांकि ये स्कूटी है, तो इसकी स्पीड देखिए आप। यहाँ पे स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गति ले सकते हैं और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आगे का रास्ता कैसा होगा, चूंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका, कल रात को मैंने देखा है, तो वो फिर रास्ते से आपको समझ में आएगी फिर पूरी कहानी। अच्छा, जो पूरी पुलिस की कहानी वो ये है कि जब इस रास्ते पर अतीक का बेटा असद और गुलाम पहुंचे, तो पुलिस की एक टीम पीछे थी, वार्निंग दी, असद ने अपनी बाइक भगाई। उनका कहना है कि उसके बाद वो इस पगडंडी की तरफ भागा। फिर यह है एफआईआर में कि पुलिस की एक दूसरी टीम सामने की तरफ थी। अब यानी कि बीच में असद है, एक पीछे और एक आगे। अब यहाँ पे जो एफआईआर में कहानी है कि पुलिस की एक टीम सामने की तरफ थी, तो सामने से कोई पुलिस की टीम आ सकती है कि नहीं, ये भी मैं आपको इस सफर में भी दिखाऊंगा। और वो जो पगडंडी जहाँ पर इनकाउंटर हुआ, वो कैसी जगह है, क्योंकि एफआईआर में एक जगह पे ये भी है कि असद की बाइक जब पलटी और वो नीचे गिरा पगडंडी से, तो वहाँ उसने आड़ लेकर पुलिस वालों पे गोली चलाने की कोशिश की। तो वहाँ वो आड़ की जगह है कि नहीं। अब ये देखिए, ये जो पक्की सड़क है ये खत्म हो गई। ये इधर राइट साइड में अब देखिए, मेरे दाहिने तरफ शिकारपुरी दिखाएंगे, ये पूरा राख ही राख है, इसीलिए इसको एस डैम कहते हैं। और अब
वो जो थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ लेकिन फिर भी पक्की सड़क थी, अब यहाँ से ये सड़क शुरू हो जाती है जिसमें सड़क नहीं है, सिर्फ पगडंडी है। और यहाँ पे कितनी तेज में आप भाग सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। सामने वाले जो स्कूटी चल रही है उससे आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी में आप भागा सकते हैं। अगर आप ज्यादा तेजी में भागने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्लिप भी होगी और पलटेगी भी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं और जगह जगह ये पूरी ऊबड़ खाबड़ सड़क है। तो इसी रास्ते पर बकौल पुलिस कल करीब 12:30 से 12:45 के बीच में असद और गुलाम ये दोनों पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर, जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं था। बाद में पता चला जिसका चेचिस नंबर भी नहीं। ये देखिए, ये आप सड़क देखिए और सिर्फ अंदाजा लगाइए कि यहाँ से आप किस स्पीड में भाग सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक दो लोग ऐसे जो पुलिस से बचते हुए भाग रहे हैं। अब जाहिर है वो गाड़ी तेजी से भगाएंगे अपनी बाइक तो वो फिसल जाएंगे। बहुत पहले ही यहीं पे, अब तक जो मैंने सफर तय किया शायद वहीं पे 2-4 बार वो गिर चुके होते। और यहाँ पीछे पुलिस है, तो क्या इतना मौका था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकती? ये भी एक सवाल है। अब ये तमाम देखिए, अभी तमाम मीडिया की भी गाड़ियां चुके, वो पूरा मौका वारदात है जहां एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पे ये पूरा आप रास्ता देखिए, पूरी सड़क देखिए आप, ये यहाँ पे पूरा रास्ता है। अब मैं अपने ड्राइवर साहब से कहूँगा थोड़ा आगे चले वहाँ तक जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ था। अब बिल्कुल वो नज़दीक है। अब ये देखिए, ये पूरा रास्ता एक तो तंग, ऊपर से ये जो आप सड़क देख रहे हैं, और इसके आगे तो पुलिस के हिसाब से जो एनकाउंटर हुआ है वो यहाँ पर हुआ। बिल्कुल हम उसी जगह पर पहुँच गए। मैं ड्राइवर साहब से कहूँगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकें और मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। कहानी है कि पुलिस के हिसाब से यहाँ पर बाइक असद की और गुलाम की फिसली, और बाइक फिसलने के बाद आपने वीडियो और तस्वीर में भी देखी होगी, वो यहाँ पर आकर गिरती है। ये देखिए, ये है वो स्पॉट, क्राइम स्पॉट। ये ब्लड के अभी भी आपको कुछ जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाइक थी, इस तरफ असद था, इस तरफ गुलाम था, और ये है वो जगह जहां पर एनकाउंटर की पुलिस की पूरी थ्योरी है। अब एफआईआर क्या कहता है? वो ये कहता है कि बाइक आगे आगे, एसटीएफ की टीम पीछे पीछे, और सामने एक और टीम थी, और सामने की टीम ने जब ललकारा तो तेज गति की वजह से बाइक फिसली और यहाँ पे बाइक गिरी। अब आगे से एक सामने की टीम, जो पुलिस के हिसाब से एफआईआर में लिखा हुआ कि सामने से एक टीम भी आ रही थी। अब सामने से वो टीम आ सकती कि नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा एनकाउंटर सीन। अब आपको मैं दिखाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफआईआर की वो ये है कि पीछे से एक एसटीएफ की टीम पीछा कर रही है, और सामने से एक दूसरी पुलिस की टीम है जो आ रही है। अब यानी कि एक पीछे और एक आगे, और असद और गुलाम बीच में फंस गया। अब सामने से एक टीम आ रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये मैं आपको दिखाता हूं कि हो भी सकता है कि नहीं। ये वही रास्ता है। इस रास्ते पे मैं कल काफी यहाँ पर कई घंटे रहा। अच्छा, यहाँ आसपास में कोई घर नहीं है, आगे आपको दिखेगा, लेकिन सामने से कोई गाड़ी आ सकती है, पुलिस की टीम आ सकती है। ये मैं दिखाने के लिए आपको सामने तक ले जा रहा हूं कि सामने में है क्या, क्योंकि एफआईआर के हिसाब से एक टीम सामने की तरफ से आई थी। तो क्या पुलिस की गाड़ी, अब जाहिर सी बात है पुलिस की एक टीम जो आई थी वो पैदल तो आएगी नहीं, क्योंकि अचानक पुलिस को पता चला मुखबिर से एफआईआर के हिसाब से कि असद इस इलाके में देखा गया है, और इसीलिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई। लेकिन एफआईआर के हिसाब से एक दूसरी टीम सामने की तरफ से आ रही थी। अब जो सामने की तरफ से टीम आ रही है और पीछे की तरफ है, और उसी में असद घिर गया। तो ये है वो सामने का सच। अब आपको दिखाता हूं, ये रास्ता है, यही ये सामने है। थोड़ा मैं ड्राइवर साहब को कहूंगा कि ले चलें, मुश्किल है लेकिन फिर भी ले चलें। तो ये एफआईआर का सच है, और ये देखिए आप पूरा सच देखिए। पुलिस के हिसाब से एक टीम सामने से आ रही थी। अब यहां मैं गाड़ी से उतरता हूं और आपको कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को ही बताता हूं कि दिखाएं। ये है वो सामने का सीन। जिस 2 किलोमीटर की पगडंडी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो रास्ता यहां आकर खत्म होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी भी गाड़ी के आने का। कल रात हम लोग दीवार के उस तरफ गाड़ी में रुक गए थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था यही रास्ता है। ये दीवार है, ये देखिए, ये दीवार है, और पुलिस के हिसाब से एक दूसरी टीम पुलिस की इस तरफ से आई।
क्या इस दीवार को फलांग कर कोई गाड़ी इधर आ सकती है? तो पुलिस की जो दूसरी टीम, और एफआईआर में ये नहीं है बल्कि सामने से बाकायदा लिखा हुआ है कि सामने से एक दूसरी टीम आई, सामने दीवार है, वो पगडंडी आपको मैंने दिखा दिया एनकाउंटर की जगह। अब ये बताएं कि ये दी एंड है इस पगडंडी का, तो क्या यहाँ से पुलिस की दूसरी टीम आ सकती है? पीछे है एसटीएफ की टीम, ये हम मान सकते हैं, लेकिन इधर से मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको सिर्फ ये दीवार दिखा रहा हूं और बाकायदा मैं कहूंगा कैमरामैन में शिकारपुर से ढंग से दिखाएं, इसलिए कि ये टूटा हुआ जरूर है हिस्सा, लेकिन क्या इतनी ऊंचाई से कोई गाड़ी इस पे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। ये कुछ घर हैं उस एनकाउंटर के सबसे करीब, ये लोग भी इस तरफ कम आते हैं क्योंकि पूरा जंगली इलाका है। तो ये है एफआईआर की जुबानी पूरी कहानी कि पुलिस की एक टीम इस तरफ से आ रही थी और एक पीछे से थी। अब इस तरफ से पुलिस की टीम कैसे आई ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, झांसी, आज तक। After dreaded gangster Atiq Ahmed's son was gunned down in an encounter in Jhansi, shocking revelations have come to the fore. Uttar Pradesh cops have revealed Atiq's Pakistan link. The gangster has direct relations with Pakistani agency ISI and terrorist organization Lashkar-e-Toiba and in fact sourced weapons from them. Here's a report. Atiq Ahmed isn't just a homegrown gangster with a criminal network in the Hindi heartland. According to the remand application moved by the UP police in the Prayagraj court, he is held by tentacles from across the border in Pakistan. In a statement attributed to him in the police document, Ahmed is said to have admitted that he has no dearth of weapons. And those weapons, according to UP police application, are supplied by his ISI and Lashkar connections. The firearms dropped into India via drones through the Punjab border collected by his local associates. According to a statement as mentioned in the remand document, the same consignments are also sent to terrorists in Jammu and Kashmir. Atiq Ahmed's lawyer, however, denied the charge. पीसीआर लेने के लिए एक एप्लीकेशन में एक लाइन बढ़ा दी गई थी अभियोजन पक्ष के द्वारा, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं, पुलिस से कोई भी कहानी कर सकती है। The court in meantime has sent the jailed gangster to the 4-day police custody for questioning. With Kumar Abhishek, Bureau Report, India Today. And here's a report that has been filed by my colleague Arvind Ojha on the Pakistani links of Atiq Ahmed. माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। दरअसल दोनों की रिमांड लेते वक्त यूपी पुलिस ने अदालत में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में जो हथियार गिराए जाते हैं, अतीक और अशरफ उन हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। यूपी पुलिस ने यह कहा है कि पंजाब में वो शख्स जो पाकिस्तान से आने वाले हथियार रिसीव करता है और उस रिसीवर से अतीक और अशरफ हथियार खरीदते हैं, उस रिसीवर का पता लगाना है। Now, as the probe intensifies, Atiq ISI link in fact has surfaced. According to cops, the gangster used to get weapons from Pakistan via drones. Here's a report. He's been accused in Umesh Pal murder case, of course, because it happened on 24th March. Even if he was behind in the prison, was he in touch with the accomplices to ensure that murder took place? Because he was the witness and sole witness in the Raju Pal murder case. Dropped in drones in Punjab, and that from the border, was he accessing weapons to be able to conduct these crimes? Of course, there are bigger issues of how these weapons were easily circulated around and why was no action taken right away against that as well. These weapons, remember, that we are talking about, or the terror outfits like Lashkar-e-Taiba in Kashmir, it are, of course, the modus operandi of terrorists in Kashmir. In many ways, was he also in touch with some of those smugglers and those terrorists? Now, as many as 160 cases have been lodged against the family of gangster-turned-neta Atiq Ahmed. Properties worth over 11,684 crores have been seized. Here's a report card of Atiq's most wanted family.
A criminal family accused in multiple criminal cases and financial fraud, one after another, now facing the music for their crimes. According to UP Police, as many as 160 cases have been lodged against the family of gangster turned politician Atiq Ahmed. While Atiq and his family have become infamous now, courtesy the murder of Umesh Pal, they have a long criminal history. Just 24 hours before the Asad Ahmed encounter, the ED seized 75 lakh rupees cash and documents linked to 200 bank accounts and about 50 shell companies as a part of money laundering probe against Atiq and his family. After conducting searches on over 15 premises linked to Atiq Ahmed and his associates, apart from cash, the ED has recovered hundreds of documents pertaining to land grabbing and bank accounts. ED claims that soon some of these properties will be attached by them, and also some of the associates of Atiq Ahmed might be arrested in this case. Atiq has been named in 100 cases, while his brother Ashraf has 52 cases. Wife Shaista Parveen has 3 cases and is currently absconding. His 2 others. Okay, cutting across live to my colleague Amit, who's filing this report from the encounter site where the police has now reached. Bringing you the visuals of UP police coming to the spot, and this particular visual you can see police has taken a bullet cell that has been recovered from the encounter site. Sir, अब ये तो जो असद और गुलाम ये अभी कुछ नहीं, जब इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। ये एनकाउंटर स्पॉट से ही आपने कलेक्ट किया है इसको? वही क्या किस तरह का बुलेट है ये? किस तरह का बुलेट है? कुछ अंदाजा लग पा रहा है? देखिए, इसके बारे में नहीं बता पा रहे। पिस्टल का बुलेट लग रहा है? नहीं, पिस्टल का किसी को बता ही नहीं पा रहा है किसका है। लेकिन एनकाउंटर स्पॉट से आपने ये बुलेट रिकवर किया है? वही से। Okay, so UP police had come here for a final relook of the spot where Asad was gunned down and Ghulam was gunned down. And at this very spot, I'll ask Ajay Thakur to come closer to the spot. At this very spot where yesterday the FSL team had come, at this very spot, Ghulam's body was lying, and a bullet has been recovered. You know, used bullets, shell has been recovered from the spot, and now the UP police team is leaving from the spot. They had recovered that particular cell, and they've also taken the dimensions here. Please do note that Narendra Kumar and Vimal Kumar's team had chased down Asad as well as Ghulam from the road to this dirt road. Nearly 1.5 kilometer of chase happened on this particular dirt road. Eventually, Asad and Ghulam's bike fell down in this particular down slope, and from where they started firing at the UPSTF team. Yesterday, the encounter happened, and eventually in that encounter, Ghulam and Asad were gunned down by the UPSTF team. And the big news coming is that at ground zero, when the UP police had come again to take the final relook of the encounter spot, they have recovered a bullet cell that was probably fired during the encounter yesterday. With video journalist Ajay Thakur, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Jhansi. Okay, so that is the report that my colleague Amit has just filed from the encounter site in Jhansi, where the cops, UP cops, reached and they've recovered a bullet shell from there. My colleague Amit did try to ask the policeman over there as to whether he recognized what type of gun, revolver, pistol that came from. He of course said that that is a matter of investigation, but that has been picked up from the encounter site. Okay, we're cutting across live to DK Shivkumar, KPCC Karnataka president, who's speaking at the moment.
ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ More than we are meeting at Congress office. He's resigned at 4 o'clock. More than we are meeting at Congress Try and get a better audio line for that. More than we are meeting at Congress office. He's resigned at 4 o'clock. More than we are meeting at Congress ನಾನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅವರ ಭೇಟಿ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರ ಗೌರವ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ 4:15 No condition. It is our duty to respect him, to strengthen him. ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಜನ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಕತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನ More than we are meeting at Congress office. He's resigned at 4 o'clock. More than we are meeting at This is what DK Shivkumar has said, that 4:30 there is likely to be a meeting at the Congress office. Maybe there'll be an announcement of Lakshman Savdi then joining the Congress party. You can see Lakshman Savdi there in those images right behind DK Shivkumar. But before that, he is expected to reach the Vidhan Parishad to resign and submit his resignation to the chairman of the Legislative Council of Karnataka. Resign as an MLC. He is a BJP MLC, but he's disgruntled that the BJP has denied him a ticket from the Athani constituency in Belagavi district. He, in fact, represented that constituency 3 time rounds, but in 2018, when he contested the elections, he lost. The BJP brought him into the Legislative Council then as an MLC, but refused to give him a ticket this time round again in order to try his luck
DK Shivkumar there saying no conditions, because it was speculated that Lakshman Sawati was still having some conversation with the Congress party before coming on board with the Congress, that in fact speculated whether he would be given a ministerial position in the Congress party if he were to win from the Athni constituency and the Congress were to come to power. So there was possibly a condition which was being put by Lakshman Sawati, and he was looking at the Congress whether they would give him an assurance that he'd be made a minister in the government if the Congress were to come to power and he were to win from the Athni constituency. Slipping into a short break, coming up next, big revelation in the Umesh Pal murder case. Don Atiq was in touch with son Asad from inside jail. Atiq directed Asad on where and how to escape. Details on the other side. मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर भारती पवार जी, असम सरकार के मंत्री केशव महंता जी, यहां उपस्थित मेडिकल जगत के सभी महानुभाव, अन्य महानुभाव, अलग अलग स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां कामाख्यार ये पवित्रो भूमिर पौरा ओहोमोर होमो भाटनी भोगनोई लोई मोर प्रणाम। आप सभी को रंगाली बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर असम के नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट के सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में
नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चर्चा हुई है। आज जो भी नॉर्थ ईस्ट आता है तो यहां के रोड, रेल, एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को देखकर प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष जब मैं डिब्रूगढ़ आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुविधा का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नॉर्थ ईस्ट में लगातार बेहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो समस्या आती थी वो अब दूर हुई है। इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। वो नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए आंदोलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी राज्यों के साथ काम कर रही है।
आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, दशकों तक हमारा पूर्वोत्तर कई और चुनौतियों से जूझता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिरता की राजनीति हावी होती है, तब विकास होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हुआ। दिल्ली में जो एम्स है वो 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे, लेकिन दशकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किए थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सबका ठप पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए, वहां व्यवस्थाएं खस्ताहाल ही रही। 2014 के बाद हमने इन सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। शिलान्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकार्पण के समय भी आपका प्यार बढ़ चढ़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का अवसर मिल गया। ये आपका प्यार ही है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। दो 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार
भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर के पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की। लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बीते वर्षों में
आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज यहां असम के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का अभियान भी शुरू हुआ है। इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, उनके पैसे बचने वाले हैं। साथियों, मैं अक्सर देश के कोने कोने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करता रहता हूं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे देश की बेटियां, हमारी महिलाएं शामिल होती हैं। वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क आया है। आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे यहां महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। हमारी माताओं बहनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वजह से दूसरों को इतनी तकलीफ दें। संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से जिन हालातों में देश की करोड़ों महिलाएं रह रही थी, उसमें उनका स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा प्रभावित था। भाजपा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। साथियों, हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक आधुनिकीकरण भी कर रही है। आज आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से देशवासियों को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जा रही है। देश भर के अस्पतालों, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। इससे अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ेगी, सही डॉक्टर तक पहुंचना सरल होगा। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 38 करोड़ डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें 2 लाख से अधिक हेल्थ फैसिलिटी और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ प्रोफेशनल वेरीफाई हो चुके हैं। आज ई संजीवनी भी घर बैठे बैठे उपचार का पसंदीदा माध्यम बनती जा रही है। हम सुविधा का लाभ देश भर के 10 करोड़ साथी ले चुके हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है सबका प्रयास।
कोरोना के इस संकट काल में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे प्रभावी कोविड टीकाकरण अभियान की प्रशंसा आज दुनिया कर रही है। हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, उन्हें बहुत कम समय के भीतर दूर दूर तक पहुंचाया। इसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर से लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक के सारे साथी ने शानदार काम किया है। इतना बड़ा महायज्ञ तभी सफल होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो। सबका प्रयास की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। आइए सबका प्रयास से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के मिशन को हम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएं। एक बार फिर एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने जो प्यार दिखाया, इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, आपको प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। महोदय, give us a fine detail as to what Mercedes has done when it comes to fine-tuning the vehicle for Indian roads. Well, firstly, starting from the E-Class, if you see, we have been able to have a long wheelbase E-Class because we have customers who drive themselves on weekends, but on weekdays they have drivers for parking and others. So we said that for India, the long wheelbase is a great solution. So E-Class, the GLE, for example, comes on a longer wheelbase platform. So that's one customization. The second thing for India is also the entire thing about connected cars. So we were the first to introduce connected cars with embedded SIM. The app provides a lot of usage. And daily usages. For example, you can have you can ring fence the way the car goes in. So if your kids is getting dropped to school, if it goes beyond the perimeter, you get an alert to pre-climate control. It's such hot weather, you want to get the car ready before you get in. So these are a couple of topics there. The third pillar is localization. So we were the first again to localize an electric car in India with the EQS, and we have been continuously investing on localizing also cars for India. Right. Also, thirdly, I'd like to ask you, when it comes to the pricing for this vehicle, what 3.3 crores, it's a bit premium, of course, what the customer gets. Tell us the deciding factor of the pricing as far as this vehicle goes. So frankly, this is a CBU, so the taxes are for sure high, and therefore that reflects in the pricing. But for us, it's beyond price because we are also offering, for example, every customer who books now in this quarter will get a delivery from Lewis Hamilton. Now, this is something a money can't buy experience. And so we are focusing more on some.
presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-powered by Jaguar. Discover the magic of smart life. All right, we're getting you the details as far as the developments from the state of war Karnataka is concerned. Now, the ticket war essentially in the state of Karnataka continues. Here are the details of what's really happening as far as the BJP and the Congress now is concerned. Now, Congress is announcing a ticket to Sawadhi. Well, that's a big story we're getting at this hour. A ticket to Sawadhi. Congress announcing a ticket to Sawadhi. This was along expected lines. Sawadhi is to fight from Athani on a Congress ticket. An embarrassment here for the BJP, but is it gain for the Congress? This was being speculated for the longest time that perhaps Sawadhi is going to be now joining the Congress party, which he has. A ticket being given to Sawadhi, who's now joined the Congress party. This is now comes as a setback to the BJP essentially, given that he was associated and considered one of the taller leaders of the BJP in the state of Karnataka. Now he's going to be fighting on a Congress ticket is what is clear. That's the information that we have at this hour. Sawadhi to fight from Athani on a Congress ticket. Well, BJP leader, who was until the BJP, had previously hobnobbed with the Congress as well. It was evident and was being speculated that there is in fact a possibility of the Congress then taking him into the fold. Now it's clear that he is going to be contesting on a Congress ticket. Snubbed by the BJP, is it a gain for the Congress or not? What does he really bring to the party, Purva? Anaga? Well, what we do know is that there has been a lot of talk after Savde has put in his statement that he will be resigning from the Bharatiya Janata Party. In fact, he's also expressed his displeasure time and again after he wasn't given a ticket, where he says that he's a self-respecting and self-righteous politician and that he will not go around and be begging for a seat. That was his statement that in fact he had also given. Following that, now we're also expecting that the former Deputy Chief Minister of Karnataka, Savde, is expected to be joining with the Congress in just a short while from now. We do know that this comes after, this move from him comes right after he had gone in and submitted his resignation at the BJP there, and he has resigned from the BJP party as well. What we do hear from BJP on one side is that this is a mistake there, and in fact there had been internal talks there that were organized with Mr. Savde himself, but saying that they will be giving him another seat from another constituency or another region. But remember, Athani, the place from where Mr. Savde wanted to get his ticket and wanted to stand for in the upcoming elections, that was given to a different candidate as chosen by the BJP, and this is the very reason why he has also announced that he's displeased with the party's decision and also disappointed that he wasn't given the post that the seat that he had been contesting at, and he's also expressed that he will be quitting from the BJP shortly and joining the Congress. That's right. Apurva, be with us. Just coming back to you in a moment from now. In fact, my colleague Sagar Raj has spoken to Arun Singh on the issue of Sawadhi joining the Congress. Now it's clear Sawadhi is indeed contesting on a Congress ticket. Listening to what Arun Singh had to tell us a while ago. सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन के बारे में एक फैसला हुआ है कि 18 तक आप इसमें कुछ अपॉइंटमेंट मत कीजिए। देखिए, यह जो 4% रिजर्वेशन जो दिया था मुस्लिम को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। किसी देश में किसी अन्य कोने पे ऐसा नहीं है। उसको हटा करके 2% वकीलिका और 2% लिंगायत को देने का काम हुआ। उसी प्रकार से एससी समाज को 15 से 17%, एसटी को 3 से 7% बढ़ा करके रिजर्वेशन देने का काम भाजपा की सरकार ने किया। सर, सऊदी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं सर। यही मैं कहूंगा, भाजपा ने सब कुछ दिया।
जिस व्यक्ति को डिप्टी सीएम भी दिया कोर कमेटी में हारने के बाद कोर कमेटी में लिया है, एमएलसी बनाया, उनको ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए था। इस ऐसे निर्णय करने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कष्ट होता है। Karnataka, and also statements have come in from very senior leaders like B.S. Yediyurappa, for example, Naga, who have come out and reiterated this, that we gave him everything. Savadi only benefited from being in the BJP, isn't it? Well, that's true. In fact, that's the sentiment of the BJP, that the party gave everything to him. He was a part of the core committee. He was made the deputy leader in the council. He was made the transport minister even after losing his seat in 2018. What has he given back is what the BJP is asking. Now, for his selfish reasons, that he's gone back to Congress to fight in Athani constituency. Now, the Congress also has announced ticket for Savdi in Athani constituency against Mahesh Kumtelli. We just heard Siddaramaiah and DK Shivkumar meet Mr. Savdi and say that there is no demand from him. He only... Okay, we play that reaction out with DK Shivkumar as well, but Savdi has now joined the Congress party. Now, Naga, you were telling us about the fact that that's the sentiment really within the Bharatiya Janata Party, that he only gained from being within the party and was given important positions like Deputy CM, for example. However, here's the man who's now decided to quit the BJP, join the Congress, is contesting on a Congress ticket. The big question here really is, what's the big advantage that he brings with him? What's the big advantage for the Congress then? Because he's now joined the Congress. He's a Lingayat leader also in the northern part of Karnataka from the Belgavi region. So there is some boost for the community is what the Congress feels, that they also want to put out the message that the Lingayats are with the Congress party. So they feel that getting a big pawn like Savdi, who is also the Deputy Chief Minister, sends out a big message just 2 weeks or 3 weeks before the polls, that at least if the pollsters or the pundits don't understand the wave, clearly the MLAs and the MLCs of the BJP who have been quitting understand the wave is what the Congress is saying. So they want to create a perception that most of the sitting netas in the BJP party are moving to Congress. No, and I think a lot of this sort of rumbling was expected. Naga, the manner in which the BJP has gambled this time around, leaving out just so many loyalists in its ticket distribution, a decision that the central leadership essentially took, isn't it? Well, that's become a hot topic here in Karnataka BJP right now. At least 25 to 30 constituencies, including 10 to 12 districts, have seen rebellion from sitting MLAs and MLCs who have not been given ticket. Nehru Olekar in Haveri has gone on to say that corruption charges have been alleged against Chief Minister. He has to come clean in Udupi, in Dakshin Kannada, Bijapur, Bidar, Gulbarga, including Bangalore city. So many such places there has been rebellion and BJP is unable to control it. Be with us, Naga. I'm just coming back to you in a few moments from now. A series of reactions that have been coming in. Say 100% authenticate will be given to Saudi. He is contesting on Congress ticket. Lakshmanji is a very seasoned senior leader of the state. There is an ongoing discussion. No decision has been taken as yet. This is a social call where CLP leader, PCC and myself are meeting. Please wait and we will inform you. Sir, BJP calls this a master stroke that they fielded you against Siddaramaiah. What do you say? My party leaders ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಜೆಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. So are you strong enough to fight Siddaramaiah? No question of Siddaramaiah. I am BJP candidate. Siddaramaiah is Congress candidate. Right. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But Siddaramaiah is strong in Varuna. I don't know how much. I don't know. Provided I am the grassroots worker. You are, but you are not native to Varuna, so you're new. People are saying you're new. Whatever it may be. ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲೋ ಗೆದ್ರು ಅವರು ನೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರ, ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬಾದಾಮಿಲಿ. Correct.
ಗೆದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಡು ಯು ನೋ ಕನ್ನಡ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾದಾಮಿ 2 seats. ಅದರಿಂದ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 10th. Siddaramaiah ji is looking for second seat, which Congress is not giving. DK Shivakumar ji is looking for second seat. All senior leaders of Congress want a second seat. When they don't have leaders, when they don't have seats also, this kind of poaching and fishing and troubled water happens. I have a lot of great respect for Lakshman Saudi ji because he is also my personal friend as a party karyakarta. Only thing I can do is I can wish him the very best as a junior in the party. I am sure Saudi ji also will understand the party has done so much for Lakshman ji, so much for all others. End of the day, the party has made sure all of them have become some respectable person in the society, only with BJP's identity and nothing else. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. Out of every 6 candidates announced by BJP, one candidate is there because of nepotism. So in Karnataka, BJP means nepotism plus rowdiness plus 40% commission. Developments of the last few hours or so, in fact days, because there was a great amount of speculation that after being denied a ticket, when Safdi came out and said that he's not the kind of a person to go with a begging bowl, and that was indication enough that he's upset about BJP's gamble that they have taken in the state of Karnataka, leaving out several loyalists from the party. Deputy CM at one point in time did not get a ticket, decided to then hobnob with the Congress and then jump ship. He is now in fact contesting on a Congress ticket from Athani, is what we are learning. In fact, the Congress has welcomed him to the party. Meanwhile, the BJP says that this isn't something that we're happy about, and that the BJP did a lot for Safdi, and that there was no reason to be disgruntled this time around. He's also served as the Deputy Chief Minister of the state of Karnataka, and that things will ease out. However, it was not something that Safdi was buying right away. He decided to then directly join the Congress and is now contesting on a Congress ticket from Athani. The ticket distribution, there's been fair amount of disgruntlement within the Bharatiya Janata Party, given the kind of choices that they've made, leaving out several leaders of the BJP this time around, denying them tickets, wanting to induct fresh faces, and that's the reason why tickets have been given to at least 52 new faces in the state of Karnataka as far as the BJP is concerned. Nagarjun Dwarkanath continues to be with us on that story. Naga, explain to us the sequence of events. We're also being told that, in fact, in this meeting that Safdi had with the leaders of the Congress party, including the central in charges who are, in fact, camping in Bangalore right now, he flew in from Belgaum to Bengaluru. Get us the inside track of what really happened here. Well, when the BJP second list was announced that Athani was given to Mahesh Kumtali. Mahesh Kumtali was a Congress MLA in 2018. He defected to the BJP, won in the by-election, and then was elected from the BJP ticket. Now, Mahesh Kumtali has got a ticket from the Congress in the second list as well. Lakshman Safdi hoped to get this ticket because he was the earlier 2008 candidate. The moment that he did not get the ticket, he realized that his chances are bleak to negotiate with the party high command. Even though BL Santosh tried to speak to him, he did not receive the call, is what Safdi says. Then the offer poured in from the Congress that they would offer him Athani ticket if they joined the party. And this morning, Congress MLC Mr. Chandraj Hotioli flew with the Lakshman Safdi in a private chartered aircraft from Belgaum to Bangalore, then met Mr. Surjewala, DK Shivkumar, and both of them together came to Siddaramaiah's residence, and now a ticket issue has been resolved. Athani Congress ticket will be given to Safdi is what the Congress has decided. And in turn, is there been any demand for him to make a minister in the next Congress government? If at all the Congress comes to power, was the question posed. But Safdi said that there's no such demand as such. The only issue that he had was constituency funds as well as irrigation projects to be completed, for which Congress has in principle agreed that if party comes to power, they will take care of Athani constituency.
Naga, give us a sense of what next as far as these movements from one party to another, these transfers concerned. Get us the inside buzz of what the other leaders also who have been disgruntled in this ticket distribution plan to do next. Are there more defections expected? Well, couple more are expected is what we have been told. KPCC President Mr. Shiv Kumar also went on record that negotiation has been taken up by other disgruntled rebel BJP MLAs, and that's one of the reasons why the Congress second list is still pending. The 58 seats that the Congress has to put out is still pending from the party side. Post the negotiations done, there'll be most likely party ticket will be announced. So we are looking at Belgaum North is one such constituency where the negotiations are still in a preliminary stage. We'll have to wait and watch if this will go to a logical conclusion. All right. However, as far as ticket distribution is concerned, and Naga, this is true to BJP, Congress and any political party, those who have just joined the... Okay, we'll just in fact go back to Nagarjun Dwarkanath in a moment from now, but we're getting all the details as to what really is happening as far as former leader of the BJP, Savadi, is concerned, Lakshman Savadi, who had at one point in time also served as the Deputy Chief Minister of Karnataka. He's quit the BJP, joined the Congress and is going to be contesting from the Athani constituency. He was expecting a ticket, however, the BJP instead fielded a sitting MLA, Mahesh Kumathali from the Athani constituency in the Belagavi district, which obviously caused a fair amount of heartburn. Savdi has now joined the Congress and is contesting from Athani is what we are learning. More reactions coming in. सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन के बारे में एक फैसला हुआ है कि 18 तक आप इसमें कुछ अपॉइंटमेंट मत कीजिए। देखिए, यह जो 4% रिजर्वेशन जो दिया था मुस्लिम को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। किसी देश में किसी अन्य कोने पे ऐसा नहीं है। उसको हटा करके 2% वकीलीगा और 2% लिंगायत को देने का काम हुआ। उसी प्रकार से एससी समाज को 15 से 17%, एसटी को 3 से 7% बढ़ा करके रिजर्वेशन देने का काम भाजपा की सरकार ने किया। सर, सऊदी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे सर। यही मैं कहूंगा, भाजपा ने सब कुछ दिया। जिस व्यक्ति को डिप्टी सीएम भी दिया, कोर कमेटी में हारने के बाद कोर कमेटी में ले आए, एमएलसी बनाया, उनको ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए था। इस ऐसे निर्णय करने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कष्ट होता है। Say 100% authenticate will be given to Saudi. He is contesting on Congress ticket. Okay, the BJP says that we gave him everything in spite of the fact that he lost out. Why did he join the Congress? This, in fact, is not something that is going to boost the morale of the party workers. This isn't a good thing. We gave him everything is what the BJP says. The Congress has welcomed him to their fold, also have announced that they are in fact giving a ticket to Lakshman Savdi and that he is going to be indeed contesting from Athani constituency. Well, that's the announcement that's been made by the Congress. Savdi is a former MLA from Athani and had lost out in the 2018 elections to Kumathali. The BJP in fact repeated and gave the ticket to Kumathali. Well, the Congress boasts of having strong mass leaders in the state of Karnataka, and the man who tops that list is former Chief Minister Siddaramaiah. But ironically, Congress's internal report suggests that Siddaramaiah may lose from his choice of constituency, Kolar. So Sidda has decided to fall back on his son's constituency, Varuna. Even as his son Yatindra has made way for his father, the BJP has decided to make this a battle to remember. They fielded Lingayat heavyweight Bisomanna against Siddaramaiah in Varuna, drawing all attention to this hot seat. India Today's Nabila Jamal brings you the mood and the color from battleground Varuna. I'm at the beautiful
beautiful Varuna constituency in the old Mysuru region of Karnataka. One could really say that this could look like a foreign land, but believe me, this is Karnataka's old Mysuru region, where we're seeing this stunning lake in Varuna constituency. Would you like to tell our national viewers here the beauty of Karnataka? And Varuna here is really significant, isn't it? Yeah, definitely. So you want to explore the world, you can come and first explore Karnataka. Okay? So lovely, sir. You have a very beautiful landscape is there in Kodagu and Chikmagaluru. Yeah. So you are there, waterfalls is there means it's a joke. So you want to, joke falls. Joke falls in Karnataka. Joke falls in Karnataka. Yeah. So you want to, so explore the seashore means so many Gokarnas and up to Mangalore and this one. So lake means it's Varuna Lake. It's Varuna Lake. Lovely young girl is voting for the second time. I'd like to ask you, what will encourage you to come out and vote? You're from the same region of Varuna. What will you be motivated by? I want a better education system and infrastructure, and I think the taxes are also pretty high, so I want to see a change in that. Okay. That's my encouragement to vote second. What about you, madam? ನೀವು ಯಾಕೆ vote ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಲ? ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. You want to change in government? ಹೌದು, ಹೈ ಪ್ರೈಸ್. High prices are high. What did you say? Yeah, corruptions are more high. Corruption is more? Yeah, more. All right. So it's just like it's going same only, prices and corruption. All right. So you want to change in leadership, but at the end of it, we see so much fighting within parties. Do you encourage that? I mean, it's not good actually. Of course, it's not good. Not but what good. would you say about it? What would you say to those netas who are fighting for power? Who are all working is good, so give the tickets them. To okay, them. yeah, To to those them. who are to working. those are working. So they are not corruption means don't give. That is a good whatever they are taking in a party. They are good only. All right. That's more or less the sentiment of people here. At the end of it, people want a free or rather a fair government who would ensure basic amenities and encourage people here to motivate people here to come out and vote for reasons that are personal to them. And that would mean their basics, their water, their the expenses, education, and just the cost of living here is something that people are really concerned and want to fix. Let's hope politicians are really keenly listening to them. ಗುಜರಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈನ ಯಾರು ಸೋಲ್ಸೋರೆ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಇದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ದೇವರು. Oh my God, he actually removed his slippers just because he wanted to speak about Siddaramaiah. ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದ್ರಿ? ನಮಗೊಂದು ದೇವರು. He says Siddaramaiah is God, so he decides to remove his slippers in his honor. Again? You have ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದೇ ಮಾತಾಡೋದವರು ಗಂಡು. This young man also says the same. I want to remove my footwear because I'm talking about Siddaramaiah. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಇವಾಗ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಕೇಶನ್ ಮಗ ಅವನು ನಿಲ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಅವನು ಮುಂದಲ ಬಾರಿ ಅವನೇ ಈಗ 18-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು. If not for Yatindra, that's Siddaramaiah's son, then Siddaramaiah's grandson, but it appears that the loyalty is for Siddaramaiah's family. ಇದ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹಂಗೆ ತೋರ್ಬೇಕು. He says Yatindra does not have the personality to hit someone. He's very intelligent, but he's not strong. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. Good human being, intelligent, but not strong enough. Not as strong as Siddaramaiah. We've stopped at a really cute corner bakery here in Varuna, and I should introduce our viewers here who are from all over the country. These kind of bakery items I've not really spotted at too many places apart from Karnataka. Stuff like cream bun, dil pasand. These are things I think is fairly unique to Karnataka. There you have it. Apple cake and something like a honey cake.
which again you don't quite see apart from Karnataka. I haven't really spotted it elsewhere. I could be wrong, but love it. Love just the flavor of it. It's just so lovely to come by, hang out, have a nice filter coffee along with all those specialities from mostly northern part of Karnataka. Now, speaking of elections, within Varuna, the mood is of course upbeat, and let me ask some of them about their preferences. I don't know if they'll speak on camera, but let's hope. Yargishta nimge? ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. Siddaramaiah. Beroru? Vijendra wanted to contest from here. At least the BJP was pushing for it. Vijendra bandidre? ವಿಜೇಂದ್ರ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿಜಯ ಬಂದಿರೋ ಮನೆ ಕಳಿಸಿರೋ. ಮನೆ ಕಳಿಸಿರೋ. You sent him back home, he says. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವರು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. Somana also goes back home. ಹೋಗಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. You're saying that BJP fielding Somanna or Vijendra here in Varuna would mean that their political career is nearly ended. I'm in Varuna, this quaint little town where I've managed to find Siddaramaiah's beautiful house, centered right in the heart of Varuna constituency. And one should notice actually this entire stretch here, all the road built of concrete. It's not a tar road, it's mostly concrete. And right opposite Siddaramaiah's house is his brother's house. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. My question was, has he ever used Siddaramaiah's influence? He says no. Well, ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ. ಯಾರು ಕಟ್ಸಿದ್ದು? ನಾನೇ. ನೀವೇನಾ? ಯಾರು ಕಟ್ಸಿದ್ರು? ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು? ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ. Okay. He says his house is beautiful. He's built it on his own. Not Siddaramaiah has not helped him to do that. Basically, the man, Siddaramaiah's brother here, believes in simplicity, and he wants to stay here. Does not want to move from here, and why not? You have all the amenities here in Varuna. The other issue that's really hit home is the alleged takeover of Nandini by Amul. And in fact, most of the farmers come from this very region of Varuna, Old Mysuru. I'm right here at one of the milk collection units of Nandini, where we see a bunch of farmers. They in fact bring in all the milk from different parts of Varuna, and in this district, this is the center where milk is collected and then given to the Karnataka Milk Federation, and from there on it's supplied all over. So let me find out from them what's the mood like here. Election ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಮೂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಡೌಟ್ ಮೇಡಮ್, ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. 40 ವರ್ಷ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. No contribution from Somanna. Somanna is ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹೇಬರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು. ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಹೋಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಲಿತರು Based on caste politics, they've brought Somanna, but he has not contributed much. He's a new entrant here in Varuna, is what they say here. But ಇದು ನಂದಿನಿ ಅಮೂಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂದಿನಿನ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅಮೂಲ್ ಅಂತ ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೂಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು
40 years of Nandini here, there was no speculation of this. So now this is a political issue that's come up right in time of election, is what the man says here. Now, iga Nandini Amul merger adre takeover alla adre merger ನಮ್ಮ ರೈತರ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತದೆ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ. Even if a merger happens, they're going to protest. It's a clear message coming from farmers of the old Mysuru region, which seems to be the real issue for them right now, and something that the opposition is using to their benefit along the old Mysuru region to target the ruling BJP government in the state. For Varuna, they're saying BJP wants to field Somana against you. Do you feel threatened at all? I'm not, always I'm not thought of who is going to be my opponent. Let him come and contest. Ultimately, the people of Varuna constituency, they have to decide. But do you think Varuna was, Somana was pressured to stand against you? No, I do not know. The party has taken a decision according to my information. Let him contest. You're confident that you will win? I am 100% confident that I would win. Sir, what about your Kolar seat? Not yet decided. Are you wanting to contest even from Kolar? No. If command decides, I will contest. Otherwise, I won't contest. If not, what about your son, sir? My stand is, it's not my stand. It is the stand of the people of Kolar and neighboring district. About your son, Yatindra, he's willing to step aside for you? Yatindra is not contesting this time. This time. With all the love and affection that Sidramaiah gets here in Varuna constituency, it was quite evident for all of you to see. One can't really fight the caste equation that prevails here. And unfortunately, Karnataka still indulges in caste politics. And looking at that, the dominant caste here is the Lingayat community with 52%. The one that Somanna of the BJP hails from. Does that mean that this would hurt Sidramaiah and his prospects to victory here? Well, it's going to be a really interesting battle from Varuna constituency, all of us to watch out for. This is Nabila Jamal signing off with camera person Shiv Murthy for India Today, Varuna, Karnataka. Last
As State of War Karnataka begins, a reminder why India today is the true number one. The 5 big faces speak to us before all others. From Chief Minister Bommai, our intent is to weed out corruption, to Chief Challenger Siddaramaiah, Yes, 100% I'm an aspirant. from old warhorse Yediyurappa, And I have got 100% confidence that we are going to come back to power in Karnataka. to muscle man DK Shivakumar, My number Karnataka on 13, 141 will be the number. and Kingmaker Kumaraswamy. Offer is there. Okay. Everybody offering me. When it's Karnataka, there's no competition. India's number one election channel. Hi there, very good afternoon. You're watching Lunch Break. I'm Sneha Mordani. Let's get started with the headlines in this edition first. Big revelation in the Umesh murder case. Don Atik was in touch with son Asad from inside jail. Atik directed Asad on where and how to escape. Prime Minister Modi's mega health infrastructure outreach in the northeastern part of India unveils the first AIIMS facility in the northeast in Guwahati. Snubbed by the BJP, former Karnataka Deputy Chief Minister Savadi gets a Congress ticket from Athani. Resigning at 4 o'clock, 4:30 we are meeting at Congress office. We will be a Congress family member now. No condition. It is our duty to respect him, to strengthen him. Massive political war between Tamil Nadu BJP and DMK. Tamil Nadu BJP chief releases the DMK files of corruption after DMK raked up the Annamalai Rafale watch. Annamalai accuses MK Stalin of taking money which is not clean. Sonia Gandhi launches another scathing attack on Prime Minister Modi, says liberty threatened by misusing law. Hello and welcome. You're watching India Today, and here in Jhansi, Assad's encounter is revealing shocking details. 24 hours after the encounter, the post-mortem has been done and there is a wait to hand over the body to the kith and kin of Assad and Ghulam. We're outside the post-mortem room where the post-mortem actually took place, and you can see that there are media personals who are here, right here, waiting. We are told that the dead body will be handed over under heavy security. The post-mortem was conducted in the night, and that ended at about 2 in the night, and thereafter apparently the kith and kin will be coming from Prayagraj of Assad and reaching here, and the police will do the necessary formalities. But an encounter that has shook the country, the BJP has hailed it as a mega step to eliminate the Dawn and Mafia Raj, and it's a big thumping victory as far as the Yogi Adityanath government is concerned. Shocking details coming to the fore in the Assad encounter. Sources have informed India Today that Assad was in direct contact with Father Atik, who's in jail. Atik Ahmed was apparently using a mobile phone in Sabarmati jail. Meanwhile, the remand of Atik Ahmed and Ashraf has started. They are being interrogated at the Dhumanganj police station in Prayagraj. The other shocking detail that's coming out is that Atik's ISI link is also on the scanner.
Sources have told India Today that Guddu Muslim, he's absconding and an accused in the Umeshpal murder case, reached Jhansi on the second day of the murder. He was living in a house near Paricha Dam, not so far away from the spot where the encounter happened. Remember, Paricha is just about 30 kilometers away from Jhansi, and thereafter, the FIR in the matter has been filed with the police. They say that they tried to capture Asad and Ghulam alive, but they fired at the UP-STF team. The STF has done this encounter, and after which they were killed in retaliatory firing. Meanwhile, Asad's post-mortem has now been held. We are right there where the post-mortem was held, just outside, waiting for any further movement. Atiq Ahmed's family, Atiq Ahmed's wife, Shaista Parveen, is still on the run. Viewers, she's still on the run. Shaista has proved to be a fugitive, and a court surrender may be her next motive or next move. So we'll have to wait and see, because the dynamics have quickly changed with the UP-STF gunning down Asad and Ghulam. But importantly, there are many speculations that are doing the rounds as to how Atiq's son Asad and his aide Ghulam were gunned down. India Today tries to decode this entire encounter, how this encounter happened, what do the eyewitness say, what did our reporters foresee on the ground, and what are the loopholes. Watch this report. ये वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशन हैं जिसमें एसटीएफ ने अपने सभी टीम्स को लगा दिया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले बहुत ही कम केसेस में हुआ है ऐसा, और चूँकि ये केस इतना इम्पोर्टेंट था, इस प्रकार का मर्डर जो एक माफिया गैंग द्वारा किया गया, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे रूट्स पर अटैक था। क्योंकि अगर गवाहों की इस प्रकार हत्या होगी और तो फिर कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होगा और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ये नेशनल हाईवे और मेरे पीछे चिरगांव है। आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि इस एनकाउंटर की कहानी एफआईआर की जुबानी, यानी पुलिस ने जो कुछ कहा है वो आपको बताऊंगा। ये जो इलाका है पीछे चिरगांव है। कहा गया कि चिरगांव में असद देखा गया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली, एसटीएफ की टीम यहाँ मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पर ये शुरू होता है इलाका जो कि परीक्षा पावर प्लांट या डैम आप कहें, वहां से पुलिस का कहना है कि ठीक यहीं पर असद मोटरसाइकिल पर सवार था और साथ में गुलाम। पुलिस को रोकने की कोशिश की, ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी गई और असद और गुलाम मोटरसाइकिल से इस हाईवे के छोड़कर इस कच्ची पगडंडे की तरफ भागते हैं, इस कच्चे रास्ते की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आगे का पूरा रास्ता कैसे है और कहाँ पे एनकाउंटर हुआ। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे रास्ते में एक मोटरसाइकिल किस स्पीड में जा सकती है, रास्ता कैसा है, और एक गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी में थे, जबकि असद और गुलाम मोटरसाइकिल पर। तो अब ये हाईवे को छोड़ दिया और इस कच्ची पगडंडी, ये पूरा परीक्षा जो पावर प्लांट है, जो डैम है, वो इसका रास्ता है। तो पुलिस के हिसाब से असद इस रास्ते से अब आगे निकल रहा है। यहां से ये पूरी करीब 2 किलोमीटर का चंक है। 2 किलोमीटर के रास्ते में इनकाउंटर होता है। कैसे, कहां पे क्या होता है, मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये देखिए, ये पूरा रास्ता, अब यहाँ पे ये रेत, अभी ये सारा शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इस तरफ डैम है पावर प्लांट का, और मेरे इस तरफ दाहिनी तरफ जो है, इसको एस डैम कहते हैं। यहाँ पे तमाम रेत और राख, चूंकि पावर प्लांट से जो राख निकलती है, सारी चीजें हैं, वो इस तरफ है। तो इस पूरे सड़क पर काफी ज्यादा आपको रेत मिलेगी। अभी तो ये थोड़ी बहुत आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है, तो यहाँ से फिर भी आप ठीक ठाक स्पीड में चल सकते हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, दीपक साहब, ये आपको इस हिसाब से लेके चलेंगे। तो यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे आगे देखिए, एक इत्तेफाक से मान लीजिए यही वही मोटरसाइकिल है, हालांकि ये स्कूटी है, तो इसकी स्पीड देखिए आप। यहाँ पे स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गति ले सकते हैं और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आगे का रास्ता कैसा होगा, चूंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका, कल रात को मैंने देखा है, तो वो फिर रास्ते से आपको समझ में आएगी फिर पूरी कहानी। अच्छा, जो पूरी पुलिस की कहानी वो ये है कि जब इस रास्ते पर अतीक का बेटा असद और गुलाम पहुंचे,
तो पुलिस की एक टीम पीछे थी, वार्निंग दी, असद ने अपनी बाइक भगाई। उनका कहना है कि उसके बाद वो इस पगडंडी की तरफ भागा। फिर यह है एफआईआर में कि पुलिस की एक दूसरी टीम सामने की तरफ थी। अब यानी कि बीच में असद है, एक पीछे और एक आगे। अब यहाँ पे जो एफआईआर में कहानी है कि पुलिस की एक टीम सामने की तरफ थी, तो सामने से कोई पुलिस की टीम आ सकती है कि नहीं, ये भी मैं आपको इस सफर में भी दिखाऊंगा। और वो जो पगडंडी जहाँ पर इनकाउंटर हुआ वो कैसी जगह है, क्योंकि एफआईआर में एक जगह पे ये भी है कि असद की बाइक जब पलटी और वो नीचे गिरा पगडंडी से, तो वहाँ उसने आड़ लेकर पुलिस वालों पे गोली चलाने की कोशिश की। तो वहाँ वो आड़ की जगह है कि नहीं। अब ये देखिए, ये जो पक्की सड़क है ये खत्म हो गई। ये इधर राइट साइड में अब देखिए मेरे दाहिने तरफ शिकारपुरी दिखाएंगे, ये पूरा राख ही राख है, इसीलिए इसको ऐश डैम कहते हैं। और अब वो जो थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ लेकिन फिर भी पक्की सड़क थी, अब यहाँ से ये सड़क शुरू हो जाती है, जिसमें सड़क नहीं है, सिर्फ पगडंडी है। और यहाँ पे कितनी तेज में आप भाग सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। सामने वाले जो स्कूटी चल रही है उससे आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी में आप भागा सकते हैं। अगर आप ज्यादा तेजी में भागने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्लिप भी होगी और पलटेगी भी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं और जगह जगह ये पूरी ऊबड़ खाबड़ सड़क है। तो इसी रास्ते पर बकौल पुलिस कल करीब 12:30 से 12:45 के बीच में असद और गुलाम ये दोनों पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर, जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं था। बाद में पता चला जिसका चेचिस नंबर भी नहीं। ये देखिए, ये आप सड़क देखिए और सिर्फ अंदाजा लगाइए कि यहाँ से आप किस स्पीड में भाग सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक दो लोग ऐसे जो पुलिस से बचते हुए भाग रहे हैं। अब जाहिर है वो गाड़ी तेजी से भगाएंगे अपनी बाइक तो फिसल जाएंगे। बहुत पहले ही यहीं पे, अब तक जो मैंने सफर तय किया शायद वहीं पे 2-4 बार वो गिर चुके होते। और यहाँ पीछे पुलिस है, तो क्या इतना मौका था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकती, ये भी एक सवाल है। अब ये तमाम देखिए, अभी तमाम मीडिया की भी गाड़ियां चुके, वो पूरा मौका वारदात है जहां एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पे ये पूरा आप रास्ता देखिए, पूरी सड़क देखिए आप, ये यहाँ पे पूरा रास्ता है। अब मैं अपने ड्राइवर साहब से कहूँगा थोड़ा आगे चले वहाँ तक जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ था। अब बिल्कुल वो नज़दीक है। अब ये देखिए, ये पूरा रास्ता एक तो तंग, ऊपर से ये जो आप सड़क देख रहे हैं, और इसके आगे तो पुलिस के हिसाब से जो इनकाउंटर हुआ है वो यहाँ पर हुआ। बिल्कुल हम उसी जगह पर पहुँच गए। मैं ड्राइवर साहब से कहूँगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकें और मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। कहानी है कि पुलिस के हिसाब से यहाँ पर बाइक असद की और गुलाम की फिसली, और बाइक फिसलने के बाद आपने वीडियो और तस्वीर में भी देखी होगी, वो यहाँ पर आकर गिरती है। ये देखिए, ये है वो स्पॉट, क्राइम स्पॉट। ये ब्लड के अभी भी आपको कुछ जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाइक थी, इस तरफ असद था, इस तरफ गुलाम था, और ये है वो जगह जहां पर एनकाउंटर की पुलिस की पूरी थ्योरी है। अब एफआईआर क्या कहता है, वो ये कहता है कि बाइक आगे आगे, एसटीएफ की टीम पीछे पीछे, और सामने एक और टीम थी, और सामने की टीम ने जब ललकारा तो तेज गति की वजह से बाइक फिसली और यहाँ पे बाइक गिरी। अब आगे से एक सामने की टीम, जो पुलिस के हिसाब से एफआईआर में लिखा हुआ कि सामने से एक टीम भी आ रही थी। अब सामने से वो टीम आ सकती कि नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा एनकाउंटर सीन। अब आपको मैं दिखाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफआईआर की वो ये है कि पीछे से एक एसटीएफ की टीम पीछा कर रही है, और सामने से एक दूसरी पुलिस की टीम है जो आ रही है। अब यानी कि एक पीछे और एक आगे, और असद और गुलाम बीच में फंस गया। अब सामने से एक टीम आ रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये मैं आपको दिखाता हूं कि हो भी सकता है कि नहीं। ये वही रास्ता है। इस रास्ते पे मैं कल काफी यहाँ पर कई घंटे रहा। अच्छा, यहाँ आसपास में कोई घर नहीं है, आगे आपको दिखेगा, लेकिन सामने से कोई गाड़ी आ सकती है, पुलिस की टीम आ सकती है। ये मैं दिखाने के लिए आपको सामने तक ले जा रहा हूं कि सामने में है क्या, क्योंकि एफआईआर के हिसाब से एक टीम सामने की तरफ से आई थी। तो क्या पुलिस की गाड़ी, अब जाहिर सी बात है पुलिस की एक टीम जो आई थी वो पैदल तो आएगी नहीं, क्योंकि अचानक पुलिस को पता चला मुखबिर से एफआईआर के हिसाब से कि असद इस इलाके में देखा गया है, और इसीलिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई। लेकिन एफआईआर के हिसाब से एक दूसरी टीम सामने की तरफ से आ रही थी। अब जो सामने की तरफ से टीम आ रही है
और पीछे की तरफ है और उसी में असद घिर गया। तो ये है वो सामने का सच। अब आपको दिखाता हूं, ये रास्ता है, यही ये सामने है। थोड़ा मैं ड्राइवर साहब को कहूंगा कि ले चलें, मुश्किल है लेकिन फिर भी ले चलें। तो ये एफआईआर का सच है और ये देखिए, आप पूरा सच देखिए। पुलिस के हिसाब से एक टीम सामने से आ रही थी। अब यहां मैं गाड़ी से उतरता हूं और आपको कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को ही बताता हूं कि दिखाएं। ये है वो सामने का सीन। जिस 2 किलोमीटर की पगडंडी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो रास्ता यहां आकर खत्म होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी भी गाड़ी के आने का। कल रात हम लोग दीवार के उस तरफ गाड़ी में रुक गए थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था यही रास्ता है। ये दीवार है, ये देखिए, ये दीवार है और पुलिस के हिसाब से एक दूसरी टीम पुलिस की इस तरफ से आई। क्या इस दीवार को फलांग कर कोई गाड़ी इधर आ सकती है? तो पुलिस की जो दूसरी टीम, और एफआईआर में ये नहीं है बल्कि सामने से बाकायदा लिखा हुआ है कि सामने से एक दूसरी टीम आई। सामने दीवार है, वो पगडंडी आपको मैंने दिखा दिया एनकाउंटर की जगह। अब ये बताएं कि ये दी एंड है इस पगडंडी का, तो क्या यहां से पुलिस की दूसरी टीम आ सकती है? पीछे है एसटीएफ की टीम, ये हम मान सकते हैं, लेकिन इधर से मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको सिर्फ ये दीवार दिखा रहा हूं और बाकायदा मैं कहूंगा कैमरामैन विनोद शिकारपुर से ढंग से दिखाएं, इसलिए कि ये टूटा हुआ जरूर है हिस्सा, लेकिन क्या इतनी ऊंचाई से कोई गाड़ी इस पे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। ये कुछ घर हैं उस एनकाउंटर के सबसे करीब। ये लोग भी इस तरफ कम आते हैं क्योंकि पूरा जंगली इलाका है। तो ये है एफआईआर की जुबानी पूरी कहानी कि पुलिस की एक टीम इस तरफ से आ रही थी और एक पीछे से थी। अब इस तरफ से पुलिस की टीम कैसे आई, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, झांसी, आज तक। So that was the ground report from the encounter spot, decoding the entire FIR. But importantly, a big breaking news coming up on India Today. UP police has claimed that Atiq Ahmed has admitted to conspiring for the murder of Umesh Pal. Importantly, Atiq Ahmed, the police said that he instructed Shaista, his wife, to arrange for new mobile phones. Not only that, the big breaking that is coming is that Atiq, in fact, told Shaista to find out how many gunners he really has, and he, in fact, instructed that the gunners should be bumped off before Umesh Pal is bumped off. Atiq Ahmed admitting to the murder, conspiring for the murder of Umesh Pal. That's a big news that is coming up on India Today. Atiq admits that he hatched a conspiracy to kill Umesh Pal and confesses that he told his wife Shaista to arrange new mobile phones, and not only mobile phones but also SIM cards to in fact coordinate this entire conspiracy. The entire conspiracy was hatched in jail, and Shaista told Atiq that Umesh has 2 gunners. In fact, it was Atiq, viewers, that we learn Atiq was the one who instructed that the gunner should be bumped off first. So Atiq Ahmed there, a big achievement for the UP police. The UP police is claiming that Atiq has admitted to conspiring against the murder of Umesh Pal. Now, that was constantly the key focus of the UP police. He was in fact being interrogated for it, and a remand had been sought. So there you are, Atiq Ahmed, just 24 hours after his son Assad was gunned down, and he broke down in the courts, crying bitterly, hoping to see his son. Atiq Ahmed, the dreaded mafia don, finally the UP police claims has admitted that he had conspired in Umesh Pal's murder case. And our correspondent Samad Srivastav is joining straight from Prayagraj with this big breaking news. Samarth, what is the update we have? A big claim by the UP police there. Well, exactly, Mausumi. As per the remand copy submitted by the Uttar Pradesh police at the CGM court, it is clearly written out there that Atiq Ahmed has accepted that he hatched the entire
conspiracy to kill Umesh Pal, and even Shaista Parveen was closely involved in this entire case. This was the news broken by India Today TV for the first time when we spoke about the mobile phones and the SIMs which were given by Shaista to the shooters, and that's what clearly written in the remand copy as per the UP police, because the remand copy was made after the interrogation. So that's a big thing coming in, where Atiq Ahmed himself is accepting that he has the entire conspiracy. And even Shaista told Atiq Ahmed that Umesh Pal has 2 gunners, and to stop Umesh Pal, they should also have to target those 2 gunners as well. And then only Atiq Ahmed passed the entire conspiracy, and then Ashraf was also involved in this from the Bareilly jail, and then new mobile phones and SIMs were brought by Shaista and given to the shooters. Though the story doesn't end here, but it is a big breaking and a big update and a massive win for Uttar Pradesh police as well, because UP police wanted this police remand for this particular reason only, where they wanted Atiq to accept or admit this particular thing, that he is behind the Umesh Pal murder case, because many were raising questions, like the people who are in Chakia still disbelieve in this all these things, what is happening to their MP Atiq Ahmed. But for them, he might be the MP, Right. but for others, he is the dreaded Don of Uttar Pradesh, who has killed many, who has got more than 100 cases on his head. Yes. Samar? Right, Samarth, do you think that after the encounter and the way Atiq actually broke down, he really thought that there was no way out and he had to confess to his sins? Well, exactly, Mosmi. When we were following the convoy of Uttar Pradesh police, and even when I tried to interview Atiq Ahmed, he had a sense of fear in his eyes, but also he was not crumbling that way, because he was saying with an intention, or we can say he could be playing the victim card, because he knew that nothing is left now. So he said, already mitti mein mil gaye hain, already submerged in the dust. So these were the statements given by Atiq Ahmed to India Today TV. But it could also be the victim card, because he knew something bad is going to happen, or he might be knowing that UP police has come closer to Asad, his son, and that's why he could be giving such a statement. And what a massive revelation came in the press conference of ADG Law and Order was that Asad, along with Ghulam, was trying to attack the convoy of UP police and free Atiq Ahmed. Yes. Right, Samarth, stay with us. Our best team is on the ground. Arvind Ojha is joining us now. He's got us this big breaking. Arvind, what are the details we have in this? Any more details? नहीं, देखिए, बिल्कुल इंडिया टुडे ने रिमांड पेपर की कॉपी एक्सेस की है, और जो अतीक ने स्टेटमेंट दिया है 161 का प्रयागराज पुलिस के सामने, वो स्टेटमेंट की कॉपी है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने प्रयागराज पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश जेल में बैठकर रची, और बकायदा अतीक अहमद ने बताया कि उसकी वाइफ शाइस्ता जेल में मिलने के लिए आती थी। उस दौरान उसने अपनी वाइफ को कहा था कि वो नए सिम कार्ड दूसरों के नंबर से खरीदे और वो लड़कों को दे। साथ ही साथ बरेली जेल में बंद जो अशरफ अतीक का भाई है, उसको भी वो सिम कार्ड प्रोवाइड कराए। लेकिन उससे भी शॉकिंग कबूलनामा जो अतीक का है वो ये है कि पहले से जो पुलिसकर्मी जो उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात थे, पहले साजिश यही थी कि सबसे पहले उन पुलिस वालों को मारना है, उसके बाद उमेश पाल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि बकायदा राजू पाल का जब 2004 में मर्डर किया था, उस दौरान जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे राजू पाल की सुरक्षा में, उन्होंने रिटेलिएट किया था। तो इस बार प्लानिंग यही थी कि जो शूटर है वो सबसे पहले उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है उनका मर्डर करेंगे, उसके बाद उमेश पाल को टारगेट करेंगे। तो ये कबूलनामा प्रयागराज पुलिस के सामने अप्रैल में अतीक अहमद ने किया है, और यही रिमांड पेपर की कॉपी में बकायदा प्रयागराज की कोर्ट में पुलिस ने रखा है। Right. Shukriya, Arvind. Arvind Ojha there getting us this big breaking. Thank you so much for joining us. And you know, the way this encounter and after that several revelations have come forth, it has actually proven that there was a big maze of crime in this family, Atiq's family, who has more than 150 cases against them. And shocking revelations also, in fact, have shown that Atiq Ahmed had links with Pakistan agency, ISI, and the Lashkar-e-Taiba, the dreaded terrorist organization. Not only that, Atiq Ahmed used to source
weapons from them. Watch this report. Atiq Ahmed isn't just a homegrown gangster with a criminal network in the Hindi heartland. According to the remand application moved by the UP police in the Prayagraj court, he is held by tentacles from across the border in Pakistan. In a statement attributed to him in the police document, Ahmed is said to have admitted that he has no dearth of weapons. And those weapons, according to UP police application, are supplied by his ISI and Lashkar connections. The firearms dropped into India via drones through the Punjab border collected by his local associates. According to a statement as mentioned in the remand document, the same consignments are also sent to terrorists in Jammu and Kashmir. Atiq Ahmed's lawyer, however, denied the charge. पीसीआर लेने के लिए एक एप्लीकेशन में एक लाइन बढ़ा दी गई थी अभियोजन पक्ष के द्वारा, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं, पुलिस से कोई भी कहानी कर सकती है. The court in meantime has sent the jailed gangster to the 4-day police custody for questioning. With Kumar Abhishek, Bureau Report, India Today. As more details come out, it has been revealed that Atiq had ISI links and he used to get weapons from Pakistan via drone through the Punjab border. Watch this report by my colleague Arvind Oja. माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है. दरअसल दोनों की रिमांड लेते वक्त यूपी पुलिस ने अदालत में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में जो हथियार गिराए जाते हैं, अतीक और अशरफ उन हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं. यूपी पुलिस ने यह कहा है कि पंजाब में वो शख्स जो पाकिस्तान से आने वाले हथियार रिसीव करता है और उस रिसीवर से अतीक और अशरफ हथियार खरीदते हैं, उस रिसीवर का पता लगाना है. It was a very dark crime world. For 43 years, Atiq Ahmed was never booked for a case. In fact, Atiq's family has about more than 160 cases against them and a property worth more than 11,000 crores. Here's a report about Atiq's most wanted family. A criminal family accused in multiple criminal cases and financial fraud, one after another, now facing the music for their crimes. According to UP police, as many as 160 cases have been lodged against the family of gangster turned politician Atiq Ahmed. While Atiq and his family have become infamous now, courtesy the murder of Umesh Pal, they have a long criminal history. Just 24 hours before the Asad Ahmed encounter, the ED seized 75 lakh rupees cash and documents linked to 200 bank accounts and about 50 shell companies as a part of money laundering probe against Atiq and his family. After conducting searches on over 15 premises linked to Atiq Ahmed and his associates, apart from cash, the ED has recovered hundreds of documents pertaining to land grabbing and bank accounts. ED claims that soon some of these properties will be attached by them and also some of the associates of Atiq Ahmed might be arrested in this case. Atiq has been named in 100 cases, while his brother Ashraf has 52 cases. Wife Shaista Parveen has 3 cases and is currently absconding. His 2 other sons, Ali and Umar Ahmed, have 1 and 3 cases respectively against them. The gangster, however, has claimed he and his family are victims, being hounded by the police. ला रहे होंगे, हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं. अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें. But here's the reality. Property is worth 11,684 crore
belonging to Atiq and his family have been seized, and 54 of his cases are currently under trial in various courts. The Prayagraj District Administration also says it has released properties amounting to 751 crore forcibly occupied by Atiq and his associates. Police have also seized properties worth 8 crore rupees linked to Atiq's wife, who is a BSP leader under the provisions of the Gangster Act. This is just the beginning of the end for this Don, who ruled for decades with no fear of the law. आज जुडिशरी का भी डर है, आज उसको प्रशासन, कानून और पुलिस का भी भय है, और यही कारण है वो कहने लगा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, जिसने कितने को जमींदोज कर दिया, कितने परिवार नष्ट कर दिए। आज वो कह रहा है मेरा परिवार दुखी है, तो ये कानून का राज्य है और ये इंसाफ का राज्य है। Atiq Ahmed's empire is in ruins, crumbling as a multi-agency crackdown is underway now. Bureau Report, India Today. When Atiq's son Asad was encountered, he was trying to flee on a bike. It was a Discovery Bajaj bike, and he was encountered about 2 kilometers away from the highway. Here's a report about the bike and the details. ये वो बाइक है, आप ये देखिए, डिस्कवर बाइक, जिस बाइक पर असद और गुलाम सवार थे। ये यहाँ पे आपको दिखाऊं, शिकारपुरी से कहूँगा, नंबर प्लेट नहीं है, बाइक पुरानी है। अब अगर हम इस बाइक को और इधर से आकर देखते हैं, आगे भी नंबर प्लेट नहीं है। ये आगे इधर मैं कहूँगा नंबर प्लेट दिखाएं शिकारपुरी, ये भी आगे भी नहीं है, तो ब्लैंक है। तो आगे पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं है। बाइक की अगर पूरी हालत आप देखें तो इस तरफ की लाइट ठीक है, यहाँ की लाइट टूटी हुई है। इस लाइट के टूटने के अलावा बाइक में और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको लगे कि ये डैमेज हुआ है। सीट भी इसकी ठीक है, और ये पूरी, ये देखिए, इस बाइक को इसकी चाबी नहीं थी, और शायद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो ये खोला गया है, शायद इसको बाद में चलाने के लिए, क्योंकि एक तरीका होता है मैकेनिक का, उसके ज़रिए, लेकिन इसकी चाबी स्पॉट पे नहीं मिली थी। हाँ, यहाँ पर एक इसका शीशा ज़रूर टूटा हुआ है, ये आगे का, ये देखिए, ये इसका शीशा टूटा हुआ है। तो ये वो बाइक है जिसके ऊपर पुलिस के हिसाब से और FIR के हिसाब से असद और गुलाम बैठा हुआ था। अब इस बाइक का चेचिस नंबर गायब है। चेचिस नंबर के ज़रिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, नंबर प्लेट के ज़रिए बाइक के मालिक का पता चल सकता है, लेकिन नंबर प्लेट कई बार ऐसे इंसिडेंट में फेक भी इस्तेमाल होते हैं। असली नंबर कुछ और होता है, फर्जी कुछ और। लेकिन चेसिस नंबर वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप बाइक के मालिक का पता कर सकते हैं। अब यहाँ खुद कल ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि इसमें चेसिस नंबर नहीं है। चेसिस नंबर नहीं होने का मतलब उसको मिटाया गया होगा, मिटाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन साथ में इसके इंजन नंबर भी होता है। और मुझे पुख्ता तौर पर तो नहीं पता, लेकिन शायद इंजन नंबर के ज़रिए भी आप इसके मालिक तक पहुँच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि ये बाइक इस बड़ा गांव थाने के अंदर मौजूद है, रखा हुआ है, लेकिन जैसे बाकी हैं, ये आप देखिए, ये पता नहीं कब से खड़ा हो, ये कैसे, पीछे आप देखिए पूरे बाइक, हर पुलिस स्टेशन के मालखाने में जाएंगे आपको यही मंजर दिखाई देगा। बरसों से पड़ा होता है, कबाड़ हो चुका होता है, क्योंकि ये सब केस प्रॉपर्टी है। जब तक केस का फैसला होता है तब तक ये बाइक अपने दम तोड़ चुका होता है, तब उसी में एक शामिल है। लेकिन इस बाइक को भी यहीं लाकर खड़ा कर दिया गया, ऐसा नहीं है। अभी ये केस प्रॉपर्टी है, ताज़ा मामला है। और इस बाइक पे अगर मैं देखूँ तो कहीं कम से कम साफ तौर पर देखने में किसी बुलेट का कोई मार्क दिखाई नहीं दे रहा। आप अगर मैं चारों तरफ से देखूं, इसमें कहीं भी कोई गोली का निशान, अगर क्रॉस फायरिंग होती है, और चूंकि बुलेट के पास ही असद और गुलाम दोनों थे, तो कई बार सटीक निशाना नहीं होता, गोलियां इधर उधर भी चलती हैं। लेकिन इस बाइक पर कहीं बुलेट के मार्क नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और बस इसका एक शीशा टूटा हुआ है, और एक ये इंडिकेटर इसका राइट साइड का, बस ये दो छोड़ दें। नंबर प्लेट आपको दिखाई चुका, बाइक पे कहीं गोली के निशान नहीं है। एक बार फिर से मैं तसल्ली कर लूँ, कहीं पे भी नहीं है। इसके अगर टायर देखें तो टायर भी ठीक है, दोनों पंक्चर नहीं है, बिल्कुल साफ हैं। और जिस तरीके से ख़ास तौर पर अगर बात करूँ,
मालखाने में लाके बाइक को धोया तो नहीं जाता। और अगर आप इसकी टायर देखें तो कायदे से जो इलाका है इनकाउंटर का मैंने आपको पूरा दिखाया, रेतीला है, वहाँ पे बहुत सारे धूल है और रेत का इलाका है। लेकिन अगर इस टायर को देखिए आप, ये देखिए टायर, ये टायर बिल्कुल क्लीन और साफ दिख रहा है। जबकि मैं कल रात वहाँ से निकला था तो धूल से जूते तक पूरे एकदम मतलब अपना रंग बदल चुका था, लेकिन इसके टायर जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। तो ये वो बाइक है जिसका पुलिस के हिसाब से इनकाउंटर में इस्तेमाल हुआ, जिस पे असद और गुलाम थे। So my colleague Shams Tahir Khan took you through the entire bike details and how the bike could it run on that dirt track which was about 2 kilometers away. We saw that bike actually flung away from the actual dirt track. That really meant that they were in top speed. But the question really is, with that up and down road, how did they manage to go on high speed on that road and being chased for more than 2 kilometers? My colleague Amit Srivastava, who's a local correspondent here, is right here, and we'll ask him about the update because we're outside, viewers, outside the mortuary where the post-mortem happened, and now the dead body is going to be handed over. क्या details हैं अभी और कब तक, जो बताया जा रहा है कि उसके नाना आने वाले हैं, कब तक पहुंचेंगे, क्या details? मैम अभी तो कल इन लोगों का लेट नाइट पोस्टमार्टम हुआ है। 4 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम के बाद इनकी बॉडी को फ्रीजर करके, इसी दोनों लोगों की बॉडी को फ्रीजर करके इसी पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है, जिसके सामने हम लोग खड़े हुए हैं इस समय। अब पुलिस के सूत्रों द्वारा छनकर ये खबर एक बाहर निकल के आ रही है कि प्रयागराज से इनके नाना और मामा असद की बॉडी को लेने के लिए और गुलाम की बॉडी को लेने के लिए उसकी पत्नी साथ आ रहे हैं ये लोग। फिर इनके हैंडओवर बॉडी को कर दिया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से पुलिस की छोटी टुकड़ी, जिसमें एक दरोगा या इंस्पेक्टर होगा, 2-3-4 सिपाही होंगे, वो उसको फॉलो करते हुए जाएंगे और उसको प्रयागराज छोड़ देंगे बॉडी को। अच्छा, अभी हम लोग वो रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें बाइक के बारे में पूरी जानकारी शम्स दे रहे थे। बाइक में नंबर प्लेट नहीं है, चेसिस नंबर नहीं है। कैसे आपको लगता है कि जब आप मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि आप बहुत पहले पहुंचे थे, तो वहां पे बाइक किस स्थिति में दिखी थी? मैम जब मैं मौके पर पहुंचा हूं तो बाइक वहां पड़ी हुई थी, लेकिन बॉडियां जा चुकी थी। बाइक में कोई चाबी नहीं था, बाइक में नंबर प्लेट नहीं था, प्लेन नंबर प्लेट थी। और बाइक का जब हम लोगों ने से बातचीत करके अधिकारियों से, STF वगैरह के अधिकारियों से पूछा कि इसका चेसिस नंबर से अगर पता किया जा सकता है नंबर क्या गाड़ी का, तो उन्होंने कहा चेसिस नंबर भी नहीं है। So there you are, no number plate on that bike. But let's go to the press conference of AIIMS Chief Asaduddin Owaisi, who's saying this is an encounter of the Constitution. Let's hear him out. जहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने घर में बैठना पड़ता है, क्योंकि वो जो हमला उन पर किया गया था उसकी वजह से उनकी सेहत पहले की तरह नहीं रही। मगर ये उनकी एक बहादुरी है, उनका एक जिद बोलिए कि वो अपना काम करते हैं। तो जब अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त भी कई लोगों ने मुझ पर आकर ताने मारे कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वो जालिम लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला किए थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं 1998 में करीब 50 दिन जेल में था। जब आप जेल में रहते हैं तो बहुत से हमा किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात होती, तो ऐसे कई लोग भी बोलना शुरू कर दिए। तो मैंने उस वक्त जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको फोन करके बोला कि जो ये एक्यूज को आपकी पूरी सिक्योरिटी बढ़ाइए और इनको कुछ ना हो। और मेरा पूरा यकीन ये था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको हम कोर्ट से सजा दिलाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें एक शख्स उनको मारने जा रहा था, उसका वीडियो है। और उसको टीम बनाई गई, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टीम ने उन एक्यूज को सजा दिलवाई। बास को कोर्ट ने छोड़ दिया। हमको तकलीफ है कि कोर्ट ने छोड़ दिया, मगर 307 में आज क्रिमिनल लॉ में वो केस को एज ए केस स्टडी सिखाया जाता है कि कैसे 5 साल उनको जेल में रखा गया अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी अगर आप बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है। मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है।
जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। अब हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में